Welcome, guys. Welcome to another episode of Expiry live stream with ICICI Direct. Today we have Mr. Rajdeepak Singh, our derivative head at ICICI Direct, as usual. Dinesh Nagpal sir will join us a bit late because he's busy with some work. So, Raj bhai, क्या लग रहा है expiry? Gaurav, for last 3 or 4 settlements, I would say the entire series has been on a negative note, and I don't see there is anything which is going to change today. The only issue is that because it is a monthly settlement, so choppiness will be quite high, and also your MSCI settlement and apart from that index reshuffling. क्या हुआ कि आप सबने देखा होगा कि पूरी सीरीज में बहुत सारे ब्लॉक डील्स हुए हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स में चेंजेस हुए हैं। तो इंडेक्स क्या करता है कि उनको एक्सपायरी वाले दिन उसके बेसिस पर वेट्स चेंज करता है, तो उसका वो सब कुछ वो आज इफेक्टिव होगा। कोई लोड हाँ, तो जैसे मान के चलिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अदानी पोर्ट्स में अगर आप देखोगे तो फ्री फ्लोट जो है थोड़ा बढ़ गया, तो उसका हल्का सा वेट बढ़ जाएगा इंडाइसेस में, तो हो सकता है वहां पर एक बाइंग आए। और एमएससीआई में 6 स्टॉक्स नए ऐड हुए हैं। अब वो जो 6 स्टॉक्स नए ऐड हुए हैं वो किसी न किसी को तो बेच के उनके लिए पैसा आएगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए 230 onwards I believe it is going to be quite volatile. I will not get into that, but before then, till then, this is sell on rise market. Last time also we have asked people to buy put, और despite Nifty closing at the day's low, we were not able to make money. अगर किसी ने शॉर्ट स्ट्रेडल भी किया था तो क्योंकि वो बिल्कुल डे लो पे जाके बंद हुआ, तो एट द एंड ऑफ द डे ही वाजंट एबल टू मेक मनी। इट वाज मोर ऑफ ए ब्रेक इवन। सो जिन्होंने पुट ऑप्शन बाय किया उनके लिए भी पैसा नहीं बना, जिन्होंने शॉर्ट स्ट्रेडल किया उनका भी पैसा नहीं बना। सो दैट्स व्हाट हैपेंड इन द लास्ट वीकली एक्सपायरी, and as of now for Nifty it's more of a sell on rise. Bank Nifty is relatively weaker, and in case somebody wants to play for short covering, if we have to look out for the short covering, then I believe only beyond 44,250 we should be looking at that. नीचे के लेवल पे 44,000 में जो कंसंट्रेशन है, जिस तरीके से पुट ऑप्शन राइटिंग हुई थी, वो अभी भी इंटैक्ट है, उसमें इतना ज्यादा चेंज नहीं आया। तो शायद 44,000 के आसपास हमें सेटलमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर वीकनेस यहाँ से बढ़ती है, then it could be very bad day for the market. ओके राज भाई अभी बस जस्ट सेइंग बिकॉज़ शायद दिनेश सर नहीं है, तो आई हेल्प यू आउट विद द चार्ट्स। तो आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन टू सी द चार्ट्स निफ्टी का। सो निफ्टी जस्ट मेड अ लो ऑफ 19,300 रीसेंट, अभी यही 15 मिनट में 19,303 का लो मार के इट हैज अगेन रिकवर्ड बाय 10 पॉइंट्स, एंड इट इज लाइक द सेकेंड टाइम इन टुडे इंट्राडे में जब निफ्टी 19,300 के लेवल से ऊपर गया। मतलब previous low was 19,304, it bounced up till 19,335, and again we have seen a low towards 19,303, and again a small 10-15 point bounce which has taken it to 19,315. So अभी हम बोल सकते हैं कि 19,300 is a very crucial level जहां पे make or break हो सकता है। मतलब if we hold 19,300 we may see some bounce, some rise near 19,400 जहां पे आपको sell on rise का opportunity मिल सकता है ऊपर लेवल पे, या if we break 19,300 we may start going down because 19,300 ये वीकली सीरीज, अगर आप वीकली मंडे से लेके अभी तक देखेंगे तो हैज बीन अ बेस फॉर मेनी पीपल बिकॉज 19,300 वाज नॉट ब्रोकन एंड लॉट ऑफ पुट राइटिंग वाज विटनेस एट दिस स्ट्राइक एज वेल। देखो गौरव, पिछले 15 मिनट का अगर आप डेटा देखोगे ना, आई एम जस्ट गेटिंग इनटू डेटा राइट नाउ, या तो यू कैन शेयर अ स्क्रीन राज भाई, आई थिंक वुड बी श्योर वो। या आई एम स्टॉपिंग माय वीडियो बिकॉज उससे जो है थोड़ा बैंडविड्थ पे असर पड़ता है। एब्सोल्युटली नो वरीज राज भाई। हाँ, तो अगर मैं, आप स्क्रीन दिख रही है? यस यस। हाँ, तो 19,300 पुट में पिछले 15 मिनट में करीब 11 लाख शेयर कटे हैं। उसके सामने 19,300 कॉल में लोगों ने पोजीशन बनानी चालू कर दी है। इवन आईटीएम कॉल 19,250 में थोड़ी सी पोजीशंस बननी चालू हो गई हैं। तो पोजीशंस कॉल साइड में क्लियरली दे आर शिफ्टिंग डाउनवर्ड्स। दिस इज लास्ट 15 मिनट्स जो जिसमें हमें वो डिक्लाइन देखने को मिली थी ना, तो उसका एक असर हो सकता है। बट ओवरऑल अगेन
the way we have explained it earlier also, the day doesn't mean buying call options. हम पिछले 3-4 हफ्ते से हम एक ही व्यू बार बार दे रहे हैं कि कॉल ऑप्शन बाई करके आप जो है पैसा मत जलाइए। मार्केट में बहुत वीकनेस है और एक तरफ आपके मिड कैप और स्मॉल कैप नेम्स हैं और एक तरफ आपके लार्ज हैवी वेट्स हैं। तो रिलायंस और एचडीएफसी ये दोनों मिलाकर 25% वेट है मार्केट में। अगर इनमें प्रेशर है तो निफ्टी नहीं चलेगा। अगर एचडीएफसी बैंक में प्रेशर है तो बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। उसके सामने अगर आपके लो टियर स्टॉक 10% भी चल जाते हैं और बैंक निफ्टी आपका एचडीएफसी बैंक आपका 1.5% भी गिरता है तो बैंक निफ्टी निगेटिव ही होगा। तो जिस तरीके से अभी डेटा है वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो उसमें वीकनेस अभी और आ सकती है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया हो। और बस इतना ही है कि 19300 को ये होल्ड करके रखे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि आपका जो फ्यूचर है वो 15-16 पॉइंट का डिस्काउंट है। धीमे धीमे जो है ये फ्यूचर ये जो है कम हो रहा है डिस्काउंट। थोड़ी देर पहले ये 25 पॉइंट का डिस्काउंट था। तो ये अगर डिस्काउंट कम होता है देन इट्स फाइन, बट द वे डिस्काउंट इज बिल्डिंग अप दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। सो ओनली बियॉन्ड ये जो हमने रिसेंट हाई मारा है निफ्टी फ्यूचर्स में समवेयर क्लोज टू आई वुड से 320 राइट, उसके ऊपर अगर फ्यूचर जा रहा है या स्पॉट में हम लोग 340 के ऊपर देख रहे हैं तभी हम लोग एक बार कॉल की साइड में या पॉजिटिव साइड में ट्रेड करने का सोचेंगे। अदरवाइज इट विल बी बेटर कि हम जो है सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी रखते हैं। Okay. Raj bhai, I think आपने what points you have taken. So viewers, we'll take the session in Hindi and English both. So ones who are like, I'll just summarize it in English first. So viewers, right now 19,000 and on the upside 19,330. This is the 330 in the spot. I think that is the new swing high above which Rajdeepak will have comfort in seeing some more move in the market. Again, he is reiterating that call option should not be taken. Nobody will make money buying call option. I think this has been the stance for entire August expiry, that call option you will rarely make any profits. Every August series, every expiry session, I'm not saying the entire month, I'm talking about Thursdays when we come live. So right now वापस से अभी वही है कि market is sell on rise for him as well. So we'll wait for levels to be broken. Once the level is broken, I think the trades can be initiated. So Rajbhai, any level that you're looking in the Nifty or bank in Nifty right now where you can buy put, or on the higher side where one can initiate some put option? See, 19,300 again, spot, or you would want to see नहीं a मैं premium थोड़ा level? सा देखो पिछली बार भी गौरव यही हुआ था हमारे साथ, इफ पीपल टू रिमेम्बर दैट, कि हम लोगों का व्यू निगेटिव था बट हमने पुट ऑप्शन बाई किए समवेयर अराउंड करंट लेवल्स ओनली। वो मार्केट 310 और 311 के ही आसपास था। और क्या हुआ कि इतनी देर तक वो रेंज बाउंड बना रहा कि हम लोग जो है नहीं कर पाए। आज भी अगर मेरे को लगता है कि 330 335 मुझे स्पॉट में दिखता है तो आई विल बाय पुट। और उस केस में मेरा देखो अभी जिस तरह से ऑप्शंस प्रीमियम है ना वो थोड़े से दबे हुए हैं रिलेटिवली। मतलब अगर आप देखोगे तो जो प्रीवियस लो है उससे जब निफ्टी ने लो मारा था तो आपके पुट ऑप्शंस का भाव 40 रुपए तक गया था, अभी आपका 33 रुपए है, जबकि आप ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे हो राइट। तो ये जो चालू हुई है Absolutely. थीटा राइटिंग ये मेरे ख्याल से हो सकता है थोड़ी देर और चले। यही Hmm. ऑप्शन अगर 24 रुपए या 22 रुपए पर मिलता है थीटा की वजह से ये एक बार पक्के से नीचे आएगा। और ये जो Hmm. कंसोलिडेशन है जो हम लोग देख रहे हैं इट माइट कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। ऐसा नहीं है कि ये Hmm. एक घंटे में बंद हो जाए, ये आपके और लंबा जा सकता है। Right. ये एक सेकंड में तो राज भाई, दिस वाज निफ्टी। तो एक बार बैंक निफ्टी कवर कर लेते हैं, एंड अगर बीच में कोई ट्रेड निकले निफ्टी में तो वील इनिशिएट, यू इनिशिएटेड ऑन, मुझे बोल देना, मैं चैट पे भी डालूंगा। सो राइट नाउ देयर इज नो ट्रेड फ्रॉम योर एंड, सो वील जस्ट एनालाइज बैंक निफ्टी फॉर टाइम बीइंग। एंड आल्सो राज भाई, आज एक स्पेशल डे है, बैंक निफ्टी का लास्ट थर्सडे एक्सपायरी है। बैंक एक्सपायरी विल बी shifting from September. So today is another, it's a special day I can say for Bank Nifty because Thursday expiry का last day है इसका। यस देखो Yeah. गौरव इस वक्त जो स्क्रीन शेयर मैंने किया हुआ है ये निफ्टी फ्यूचर्स का वो है। और Okay. ये लास्ट थर्सडे को हुआ था 25 तारीख को। Right. तो ऑन Yeah. 25th व्हाट हैपेंड दैट इट हैज केम डाउन, Yeah. मार्जिनल रिकवरी वाज सीन,
Then Yeah. again, if I spend almost entire day, and whatever Yeah. the selling we have witnessed, that is from the 3 p.m. Yeah. So from 11:30, I would say, right? Yeah. 11:30 to 3, nothing has happened in the market. Yeah. Today, what we are witnessing, there is a continued pressure. Okay, market is coming down, so it's more Yeah. of a we sell call. That would be much better strategy, right? Okay. Yeah, I think selling call could be much better, but यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है कि आपका स्पॉट 300 का चल रहा है और आपके कॉल ऑप्शन का भाव 20 रुपए है और पुट ऑप्शन का भाव 36 रुपए है, मतलब योर पुट ऑप्शंस आर एट सिग्निफिकेंटली हायर As we बिकॉज ऑफ द speak, Nifty has made a fresh day low. या 19300 has been reached. Yes, and I think the previous swing low has been breached. So let's see if we get a 15-minute candle close below 19303. And if that comes in, I think that is a confirmation, Rajbhai, for us to initiate Yes, something. I believe market is moving towards 250. The only point is when we want to buy Yeah. this put option. Okay. Market So is any levels, still, Rajbhai? yes, Right now it is at 36, 37. 36, 37. Yeah. So around 30 or around 25, what is your preferred level if you want to give? I would prefer 25, Gaurav. 25. Okay. So basically you're 10 rupees up. So यहाँ से अगर एक 10-15 पॉइंट का बाउंस आता है then that on that bounce you're probably expecting. Yes, yes, yes. Okay. So viewers, कंसर्न यही 19. है गौरव, बार बार वही बोल रहा हूँ, कंसर्न वही है कि I get it. पिछली बार की तरह दोबारा से हम लोग अगर थीटा डिक्के में घुस गए तो वी विल नॉट बी एबल टू मेक मनी. Right. So let's wait. मतलब I think मैं हम wait ही करते हैं. It is 35. 25 is a preferred level. Initiation of the trade we'll see when it comes to 25 because that time also it is वो टाइम पे हम देखते हैं कि क्या करना है but viewers again making it very clear you are not supposed to get into call options. Buying call option or selling put option would be very risky. The view or the trend for today's expiry is also negative according to Mr. Raj Deepak Singh, and this has been the case from past four expiries. This is the fifth one, and every time we have seen Nifty tanking, going down, shedding some points, 30-40 points in the last session as well after a weak start. So yes, that is the view. So Rajbhai, we cover Bank Nifty till then, and then we move on to our trades and some questions from whatever trades our viewers have taken. Sure. Yeah. सबसे पहले तो मैं ऑप्शंस डेटा पे आना चाहूंगा बैंक निफ्टी के. तो यहाँ का जो 44,000 का पुट बेस है, ठीक है ना, दैट इज स्टिल क्वाइट हाई. क्लोजर हुआ है, सब कुछ हुआ है, बट स्टिल द पुट 44,000 पुट बेस इज क्वाइट हाई कंपेयर टू कॉल. 43,900 is dramatically higher, almost 1.25 crore shares if I'm not wrong. Yeah. And spot is holding 44. If you are looking at the futures, then it is somewhere around 43,970. But in spot, it is holding 44. So until unless we don't see it's breaking decisively below 4,400, 44,000, till then we should be avoiding bank shorting bank nifty. And here, Okay. if you look at the HDFC bank, then rest of the private sector bank and PSU banks, they are under pressure. But HDFC bank, anyway, it is the biggest underperformer of the series. Somewhere from 1700, it is trading around 1570. और Yeah. पिछली एक्सपायरीज में हर बार जब भी प्रेशर आया है एचडीएफसी बैंक इज द वाज द विक्टिम. बट आज जो है ये इसमें उस तरह का प्रेशर एचडीएफसी बैंक में अभी तक तो नहीं देखने को मिला. बैंक निफ्टी हैज मेड द लो, एचडीएफसी बैंक हैज बीन स्टैग्नेटिंग, यू कैन से हैज बीन स्टैग्नेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो अगर ये 1580 के ऊपर निकलता है तो परहैप्स आई माइट इवन बी टेम्प्टेड टू बाय कॉल ऑप्शन. So for Bank Nifty, I am looking at the HDFC Bank. यहाँ पर तो मैं शॉर्ट अब इस लेवल पे 44,000 पे तो नहीं करूंगा. 44,000 टूटता है मेरे ख्याल से, अगर 43,950 सॉर्ट ऑफ लेवल मिलते हैं मेरे को दोबारा से, तो मैं एक लंबा जो है नेकेड शॉर्ट जो है एक तरीके से पुट बाय करके मैं जा सकता हूँ. वीकनेस क्लियरली इज मोर इन निफ्टी देन बैंक निफ्टी. निफ्टी का अगर आप देखोगे, मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ यहाँ पर.
तो ये देखिए बैंक निफ्टी का जो लो है दैट वाज समवेयर अराउंड 16th ऑफ अगस्त, मिड ऑफ सीरीज में इसने लो मारा और तब से जो है ये इन लोज के पास नहीं है, ठीक है ना। उससे अच्छा खासा मतलब करीब 400-500 पॉइंट ऊपर है, जबकि निफ्टी जो है ऑलमोस्ट इज ट्रेडिंग नियर द लोज। जो बैंक निफ्टी में रिकवरी मिली है 15 अगस्त या 16 अगस्त से, वो हमें बैंक निफ्टी में नहीं मिली, क्योंकि हमारे अदर स्टॉक्स लाइक एचयूएल, रिलायंस और इंटायर एफएमसीजी पैक, दे आर कमिंग इनटू द प्रेशर, बट बैंक निफ्टी समहाउ वाज एबल टू होल्ड। तो बैंक निफ्टी मेरे लिए आज की ट्रेड की अगर बात करूं तो अगर ये नया लो मारता है या 43,950 के नीचे थोड़ी देर सस्टेन करता है, देन आई विल लुक एट बाइंग पुट्स। अदरवाइज एज ऑफ नाउ नो ट्रेड ऑन द हायर साइड। 44,150 के ऊपर एक बार मैं अटेम्प्ट लेने की कोशिश करूंगा, बट कंफर्मेशन शुड बी समवेयर क्लोज टू 44,200। अभी एब्सोल्युटली। थीटा डीके का पूरा टाइम मुझे लग रहा है कि अगला 1 घंटा 1.5 घंटा थीटा डीके होगा। मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। सो फ्रॉम 230 ऑनवर्ड्स इट वुड बी मोर ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रैडल, नो थीटा स्ट्रेटजी आफ्टर 230। ओके, ओके, वर्क्स। और आई देखिए थिंक दैट इज बात परफेक्ट। करते करते दोबारा से वो 36 का 30 हो गया। यस, again I think entry will be very crucial, Rajbhai. And viewers, today's market is a bit tricky because we have an event of MSCI also coming, and today there is a huge outflow in top heavyweights. I'll just reiterate here ki what is the outflow today, what is like the expected outflow. Sorry, this is not the perfect outflow, but these are the expected outflows. So major outflow is expected in Reliance, that is around $130 million. Then comes ICICI Bank, which is $78 million. Then Infosys, 77. HDFC Bank is somewhere around $58 million. TCS 53, and the Hindustan Unilever 35. So if you see, weight down would be in heavyweights of the index, and that starts from Reliance, ICICI, Infosys, TCS, Unilever, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, Bajaj Finance, Bharti Airtel, L&T, Wipro, M&M, ITC, Maruti Suzuki, Asian Paints, UPL. I think these are all the Nifty 50 shares. So Rajbhai, this can be a tricky affair today, if I'm not wrong, if I'm guessing it right. देखो गौरव, इसके दो पहलू हैं देखने के। अगर आप पूरी हाँ, सीरीज में देखोगे तो दीज स्टॉक्स हैव बीन अंडर प्रेशर, राइट जी। इनसे आउटफ्लो है, और जहां पे इनफ्लो आने की बात है, पीएफसी, आरईसी, सॉरी पीएफसी एंड अदर स्टॉक्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी इंक्लूडेड इन एमएससीआई, सो दे वर ट्रेडिंग एट द हाइस, मतलब उनमें जो इनफ्लो है, तो ऑलरेडी जो है मेरे हिसाब से चीजें जो है काफी हद तक बैलेंस हो चुकी हैं, लोगों ने अपनी पोजीशंस बना ली हैं। रिलायंस आपका 2550 या 2600 से इस वक्त 2400 पर है, तो 200 पॉइंट की जो डिक्लाइन मिली इसमें, या एचडीएफसी बैंक में जो हमें जिस तरह की डिक्लाइन मिली है, तो ये आउटफ्लो वाली जो पोजीशंस हैं वो काफी हद तक मार्केट ने उनको मतलब सेटल कर रखा है। तो इस वजह से मुझे उतना बड़ा फ्लो नहीं लगता। एमएससीआई की वजह से जो भी होगा वो पोजीशंस की आपस में हो जाएगा। मुझे जो इंडेक्स रिशफलिंग है निफ्टी की, उसकी वजह से ज्यादा फ्लोज में मतलब निफ्टी में मूव आता हुआ दिखता है, कि वहां पर क्या होगा कि आपका जेएफएस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के निकलने की वजह से क्या जो रिलायंस में वेट चेंज हुए हैं, या फिर एचडीएफसी बैंक के मर्जर हुआ, सारे बिग इवेंट्स आपकी इसी सीरीज में हुई है। तो उनकी वजह से जो आपका ओवरऑल इंडेक्स में स्टॉक्स का वेट होगा, उन सब का हम्म, रिशफलिंग आज होने वाला है, या हम्म, किसी स्टॉक में प्रमोटर ने सेल किया है या बाई किया है, जो भी है, उन सब हम्म। की रीशफलिंग का आज इंपैक्ट आएगा। तो मैं एमएससीआई को तो फिर भी एक साइड किनारे रख रहा हूँ, मेरे लिए वो Right, इंडेक्स वाली चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। right, right. सो फिलहाल के लिए हम लोग रुक रहे हैं कि क्या करना है, 230 अराउंड या बीच में कुछ लेवल्स टूटे तो हम देखेंगे। व्यूअर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी स्टॉक दैट यू वांट राजभाई टू एनालाइज, फ्यूचर्स स्टॉक्स व्हिच आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, you can put it in the chat box. We are happy to take that right now, because right now there is no trade initiation from his end, so we can take your questions. Okay, Rajbhai, someone has asked TCS, someone is holding quantity 3404 levels. So do you want to take that? या टीसीएस इज फाइन। सी, अगर मैं थोड़ा सा इसको डेरिवेटिव डेटा से बाहर जाऊं, तो अभी आपका जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स थी, वो जो
करीब 16 साल की हाई पर थी, उनमें हल्का सा कूल हम्म ऑफ देखने को मिला है। तो हम्म ये स्टॉक मेरे को लग रहा है कि ज्यादा यहाँ पर डिक्लाइन नहीं है, इट शुड फाइंड सम सपोर्ट समवेयर क्लोज टू 3350 एंड हायर। आज के मूव को प्लीज अवॉइड करो, आज के मूव को देखकर टीसीएस में अपना व्यू मत बनाइएगा, आज के मूव को देखकर एक किसी भी इंडेक्स स्टॉक में अपना व्यू मत बनाइएगा। आज काफी फॉल्स मूव मिल सकते हैं आफ्टर 230 के। अगर व्यूअर्स कैन रिमेंबर और इफ एनीवन हैज सीन कि वो कोटक बैंक में क्या हुआ था। कोटक बैंक बिकॉज ऑफ दैट इंक्लूजन और उसका जो वेट इंक्रीज हुआ था, उस दिन वो 4% चला था एक दिन में, बट उसका फ्यूचर वहीं का वहीं बना रहा। तो कैश मार्केट में आज थोड़े से हमें बड़े ट्रेड और बड़ा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, बट प्लीज कंसीडर दम एज अ फॉल्स ट्रेड। एंड आप जो है कल जो है एक बार के लिए सबको दोबारा देख सकते हैं। तो सो प्लीज डोंट कीप द स्टॉप लॉस एटलीस्ट फॉर द स्टॉक्स लाइक टीसीएस विद जो मैं बोल रहा हूँ कि 3350। अगर ये आज आता है तो प्लीज अवॉइड। ठीक, कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस राज रखना भाई, पड़ेगा। राज भाई, जी। 19,300 पुट इज एट 44। बात करते करते मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि एक डाउनसाइड मूव आ गई है। अब आप बताइए आपको क्या लग रहा है? Can you want to wait till 12:30? You want to see that 15-minute candle closing and then taking this analysis up, or you're okay taking it right now? मैं दुविधा में हूँ गौरव, पिछली बार वाला जो हुआ है मेरे साथ, उसकी वजह से मैं थोड़ा दुविधा में हूँ। व्यू रिमेन्स नेगेटिव, बट वेदर Yeah. आई शुड बाय पुट राइट अवे और ऑन डिक्लाइन, दैट इज समथिंग व्हिच आई एम जस्ट। और ये मुझे इंसाइट कर रहा है जो पुट ऑप्शंस के प्राइस बढ़े हैं। Right. I got it. I got it. नहीं, मैं But I नहीं think हूँ। आई it's थिंक okay. 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 You're आप not अगर comfortable at this level. It's okay. नो, But इट्स I नॉट think अबाउट you're कंफर्टेबल, इट्स अबाउट कि मैं ऊपर आता है तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ मैं लेवल ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बनेगा। यहाँ पर क्या है कि 40 रुपए में अगर मैं 25 रुपए का 10-15 रुपए का भी स्टॉप लॉस देता हूँ तो वो तो मेरी एंट्री प्राइस थी 25 रुपए की, राइट? तो तो राज भाई एक थोड़ा काम करते हैं, आप जो लेवल पे कोई स्ट्राइक पे कंफर्टेबल हो तभी लेंगे। आई थिंक व्यूअर्स हाँ। द व्यू इज नेगेटिव। व्यू एक्सप्ले इफ यू वांट टू प्ले द एक्सपायरी मूव, राज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम आवर डेरिवेटिव हेड दैट प्ले फॉर अ डाउनसाइड व्यू। डाउनसाइड में ही पैसे बनेंगे आज, पुट ऑप्शन में ही पैसे बनेंगे, कॉल ऑप्शन बाइंग पैसे नहीं बनेंगे। सो आई वी जस्ट स्टिक टू दैट। वी हैव मिस्ड द एंट्री बिकॉज 19,300 पुट वाज गिवन लाइक यहाँ ओके। आने से पहले वन यस क्लिक डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने यही 19350 का पुट दिया था। रेंज जो हमारी एग्जैक्टली। थी 25 से 27 थी, ठीक है? तो Because वो I last time हमने explain किया था कि we start at 12 o'clock and we may see some move before 12 o'clock as well. So to not miss that on expiry day or any day, you can view the one click derivative feature, which the calls here are initiated by Raj Deepak and his team. So you can go and have a look at here as well, Pele. And the level of 19,300 put was somewhere around 25, 27, which was anyway given on our website of ICICI Direct in one click derivative, one click FNO option. So that is why Raj Deepak is not comfortable initiating a long in 19,300 put at this level because it has already moved up by 50%. मतलब अगर आप देखें 25 move from 25 to 40 is in a way more than 50% move which has already been captured. That is why he's not comfortable, and I get, and it's completely right on his part as well because the level is 25, so it's not good to initiate a trade at 35, 36. सी वी ठीक हैड है। गिवन दिस। हाँ, मैंने हम लोगों ने करीब 10:30 बजे दिया था 25 से 27 पर, 12:22 पे हमने अभी बुक किया। अगर हमने वहां बुक किया है तो मैं दोबारा से राइट इस चीज को नहीं देना चाहता, राइट इस वजह राइट। से मैंने हाँ बुक किया था। नहीं नहीं राज भाई, ये बराबर है। तो व्यूअर्स, जस्ट वन थिंग ऑन, वी डू दिस एवरी थर्सडे बिफोर 12 o'clock। व्हाट यू कैन डू इज आप लोग एक बार वन क्लिक डेरिवेटिव जाके वन यू कैन लुक एट दिस platform in this page of one click FNO. You can see whatever put option or call option is initiated by our team, and then it is better to not miss that entry price because we start at 12 o'clock, and 3 hours in that 3 hours a lot of move can already be, like we can witness some move. And I think now again it has gone to 42. Nifty is again hitting days low. So Rajbhai, I'll take this. Is 19,250 put on your radar? है, मैं मान रहा हूँ ना इस चीज के लिए कि मैंने जो मुझे मार्केट की सेटलमेंट लग रही है दैट कुड बी मंथ लो, और इफ
by 230 we should see those levels 19250. So मेरे लिए टू नॉट इवन 250, आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर क्लोज टू 230. बट अगेन अगर वो 278 से एक बार 310 भी आता है फ्यूचर्स हमारा, या स्पॉट 296 से 320 आता है, तो आपके ऑप्शंस जो है ना यहाँ से 25-25 रुपए गिर जाएंगे. तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्रेश एंट्री अपॉर्चुनिटी. व्यू रिमेन्स नेगेटिव, प्लीज डोंट बाय कॉल ऑप्शंस, दैट इज फॉर Yeah. श्योर. हाँ, There's मैं one केवल question. Yeah, Rajbir, there's one question. Someone asking, can we sell 19250 put option? I think you नहीं have सर, made it very clearly. नहीं Yes. सर, आप वो 10 रुपए के लिए इट कुड बी और 40 रुपीज. Yeah. 12 रुपए का चल रहा है, बेचने को लगता है कि हाँ बेचा जाए, बट इट डजंट मेक सेंस. आप बाकी दिनों में थीटा प्ले करिए, एक्सपायरी वाले दिन 12:30 के बाद प्लीज जो है, बहुत बार होता है कि आपका ये 12 रुपए जीरो ही हो जाएगा, बट Right. chances of losing money is more. And as an analyst and as an trader, I can only advise you, please don't look out, please look out for capital protection first, then about making money. Right. Rajbir, someone's asking, किसी ने अभी ले लिया है, तो ही इज आस्किंग फॉर टारगेट्स एट 90 पुट. सो कैन यू गिव अ टारगेट बाय, जिन्होंने बाय चांस इसको एग्जीक्यूट किया है. आई थिंक प्लेटफॉर्म पे टारगेट इज 55, बट अभी Yes. आप बता सकते हो फ्रेश टारगेट, नहीं तो वो नहीं, अच्छा द रहेगा. टारगेट रिमेन सेम 55. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि मुझे 230 240 के आसपास का निफ्टी का एक बार टेस्ट होता हुआ लग रहा है. तो उस केस में जो निफ्टी का 19300 पुट होना चाहिए, दैट शुड बी समवेयर क्लोज टू 55 रुपीस. सो माय टारगेट रिमेन सेम. Okay, the target is 55. And Rajbhai, someone's asking what are the trades given today? So can you just open that page of one click derivative to show them? See, first of all, let me tell you how to go into a one-click derivative. So, in our website F&O, under Smart Tools, we are having this one-click F&O, and in F&O, that there is another tab that is recommended one-click. So, we had given Nifty Select Mid-Cap, Nifty Select Short Straddle uh, yesterday. That is still open. We had given long TCS also. We had given buying in Axis Bank call option yesterday, but today's recommendation, whatever we had given, those were one United Spirits stop loss is hit. एक बैंक निफ्टी का हम लोगों ने कल दिया था कॉल ऑप्शन, उसमें पैसा बना है. फिर पुट पे हम लोगों ने बाई किया है, और निफ्टी का एक और पुट बाई किया है. तो हम लोगों ने 2 बार तो पुट बाई करके बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम लोगों ने पैसा बनाया है. इसके अलावा बाकी जो है वो पोजीशन रिकमेंडेशंस ओपन है, जो हमारी अगली सीरीज की है. वो टीसीएस है, अदानी पोर्ट्स में हम लोगों ने बाय दिया था. बुल कॉल स्प्रेड है, दैट इज नॉट समथिंग इन फ्यूचर्स और नेकेड कॉल ऑप्शन, दैट इज अ बुल कॉल स्प्रेड. तो अगर किसी को कल निफ्टी की देखनी है तो यहाँ पर आकर निफ्टी की स्ट्रेटजी देख सकता है. अगर किसी को बैंक निफ्टी की देखनी है तो बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी देख सकता है. तो इस तरीके से हमारे इसमें फिल्टरेशन है, दे कैन लुक इनटू इट. I think viewers, it is very clear. You can see these calls on ICICI's website, and these calls are, again, I'm reiterating, these are calls by Rajdeepak Singh and his team. Rajdeepak Singh heads the derivative desk, so I'll say it is Rajdeepak's call only. But there are members who in his team who also initiate some calls here under his supervision. So yes, if in case you want to see any derivative trades, you can come here on this platform and absolutely look at it. Rajbhai, I'll take some questions. What देखिए are the गौरव, trades? आपका जो मैं एक बार सारे व्यूअर्स के लिए बता दूं. देखिए ये हमारा एचडीएफसी बैंक है. लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट 1570 था. थोड़ा सा ऊपर आया है. इट हैज सपोर्टेड योर बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी वही 44,000 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है लगातार. मतलब आप अगर देखोगे तो समवेयर फ्रॉम 11 इट इज ट्रेडिंग अराउंड सेम लेवल्स. नथिंग हैज हैपेंड. इट्स मोर ऑफ अ थीटा एक्सरसाइज. एंड इवन द पुट ऑप्शन व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट, एक स्पाइक आया और दोबारा से वहां पर है. तो अगेन अगर डिक्लाइन मिलती है पुट ऑप्शंस में, देन वी शुड गो लॉन्ग इन निफ्टी. बैंक निफ्टी आई एम नॉट कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द एचडीएफसी बैंक. इट होल्ड्स 35% वेट. तो अगर ये एचडीएफसी बैंक जो है 1560 के नीचे आ रहा है या 1565 के आसपास भी आ रहा है, देन परहैप्स आई वुड लुक एट कि हाँ भाई, आप बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा ही वीकनेस है. वी विल गो एंड इवन buy put options in bank nifty. But as of now,
नो बाइंग कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस आई एम जस्ट वेटिंग कि थोड़ी सी रिकवरी आ जाए, अदरवाइज व्यू रिमेन्स नेगेटिव। Okay. Okay. So, Rajbhai, okay, I'll just take some questions. Can we buy 19,200 put? I'd say no because आपने भी 230 तक का ही बोला है, तो अगर वो 19,200 का put कोई ले भी रहा है तो वो जीरो हो जाएगा, तो there's no point wasting money there. Uh, Someone asking, I have Maruti 9800 call option at 235 from yesterday. Should I hold or exit it right now? हाँ सब देखिए, पूरा ऑटो पैक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये टीवीएस मोटर को भी आप देखोगे या मारुति को देखोगे, तो मारुति ने दोबारा से 10,000 के पास आया है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इट कुड बी अ ब्रेकआउट फॉर द स्टॉक। तो मेरे ख्याल से मारुति में अभी तो निगेटिव तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप बुक करने के बारे में मेरे से पूछना चाहते हो कि हाँ मेरा आपका ऑप्शन में पैसा बन गया है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू कि बुक कर लें। बट इवन इफ यू थिंक कि आपको थोड़ा सा और वेट करना है, उस तरीके की कोई चीजें आती हैं, तो आप जो है मारुति का आपके पास 9800 का कॉल है, आप जो है अगली सीरीज का 10,200 या 10,400 का कॉल ऑप्शन बेचने की कोशिश कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो आप एक तरीके से अपनी कॉस्ट कम करके इसको लंबे के लिए होल्ड कर सकते हो। ओके। ओके। नेक्स्ट, राजभाई समझ asking, एक्सिस बैंक सितंबर का 1000 का कॉल लिया है। यहाँ मैं थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज वेरी नेगेटिव, बट समहाउ आई फील लाइक कि अलोंग विद दिस मतलब बैंकिंग जिस तरह से आया है, तो अगर यहाँ से परफॉर्मेंस आनी होगी तो दैट हैज टू बी ड्रिवन बाय एचडीएफसी बैंक। इन लोगों ने क्या किया है बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने, कि आपका जो है एचडीएफसी बैंक की वीकनेस किसी तरीके से कम किया है, और कुछ नहीं है। अगर मैं इसको अगले महीने का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, तो देखिए 1000 के कॉल स्ट्राइक में किस तरीके का हुआ है। पुट में कोई हुआ ही नहीं है, 1000 के जो भी है 1000 के कॉल ऑप्शंस में। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक बड़ी आसानी से निकलेगा 1000। थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करेगा, ठीक ठाक कंसोलिडेशन करना चाहिए इसे। हो सकता है एक और मंथ, मतलब इस महीने के लिए मैं कॉल ऑप्शन बाई नहीं करूंगा बैंकिंग में, पर्टिकुलरली एक्सिस बैंक। ओके। Okay, Rajbhai, I think fair enough there. Viewers asking, do we have Telegram channel? Yes, we have Telegram channel. I have posted a link. आप या तो you can go on Telegram. You can search ICICI Direct. It is ICICI Direct without a space. ICICI Direct, आप search करेंगे. It's a verified handle. ICICI Direct blue tick handle. You can join it. We have for 59,500 subscribers because there are few channels जो fake भी चलते हैं, so that is why I'm just mentioning the number of users that we have. So if anybody wants to join it and asking whether we have a Telegram like other brokers, yes we have. It is ICICI Direct without a space on Telegram. You can join our channel there. Okay, Rajbhai, view on to three stocks actually. I'll take Tata Steel पूछ रहा है, कोई आइबुल हाउसिंग पूछ रहा है, and someone is asking Hindalco 270 call option for September series. शुरुआत करते हैं मेटल से। Okay. Overall, metals are not negative, whether it's a Tata Steel or a Hindalco. We are positive. The only problem with the entire metal pack is their consolidation. धीमे धीमे चल रहे हैं, बहुत धीमे चल रहे हैं। We were expecting Tata Steel to even surpass 125, 130. It's not able to do so till now. But all the metal pack, whether it's a Hindalco or Tata Steel, our view is positive. Now coming to, because someone is holding it September 470 call. So let's look at it from that perspective only. Before you start this, we have Dinesh sir joined with us. Dinesh sir is here. Welcome, Dinesh sir. A Thank pleasure you, hosting Gaurav. you as usual. Thank you, Gaurav. Thank you, everyone. तो चलिए Yeah. So, sir, राज भाई ये कंटिन्यू करें we are फिर। discussing. So, we are taking viewer questions. हम्म, Yeah, Rajbhai, I'll just before Rajbhai comes in, Rajbhai is of the view that market is sell on rise again for this हम्म, expiry today because there is selling pressure हम्म, seen in the market, and he has his like his team has given 19,300 put option buy at 25 between 25 27 हम्म, on our iClick Direct on our one click FNO. Platform, and it is trading at 41. Are you yes, still? Do you still have the same view of the market doesn't have strength right now for this expiry?
For this expiry, what I am looking at is at the exactly 19300 put is that उसका एक 50 रुपया के पास में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है. ओके, जस्ट Yeah. शो इट टू यू ऑन स्क्रीन. राज भाई आप एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दें तो दिनेश सर पे ही रहते हैं. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, इसको दिखाता हूँ. You can see my screen, Gaurav? Yes. कैन यू सी हिम? या. Yes, सो yes. इसको जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना बाकी सब स्ट्राइक्स को. सो ये देखो, ये जो लेवल है, यहाँ से वो गिरा है कंसोलिडेट. जब जब थोड़ा सा बाउंस आया था मार्केट में. सो 5750 यहाँ पर गिर गिर के थर्ड अटेम्प्ट पर जाके कोलैप्स किया. नाउ कमिंग बैक टू इट. सो टुडे बीइंग एक्सपायरी नंबर 1, नंबर 2 MSCI रीबैल, नंबर 3 मंथली कैंडल. ऊपर से मंथली कैंडल सेटलमेंट तो है ही, हमारा मंथली कैंडल भी है आज. तो ये जो लेवल है ना, ये जो इसका 50 का लेवल, ये क्रूशल हो गया. सो अब ऑलरेडी इट इज नाउ नियर 38-39. सो 50 के पास इट्स अ मेक और ब्रेक. अगर वहां इसको ऊपर ये पेनिट्रेट कर जाता है बाय चांस ड्यू टू एनी, विच इज आई थिंक रफली 19,270 ऑफ द स्पॉट अंडरलाइन, वहां पर कंजेशन है. आप देखो, अगर स्पॉट का आवरली चार्ट देखोगे आप, सो जस्ट लेट मी शेयर दैट. See this congestion which took place out here at 285, 270, it matches with that 50 rupee current premium of the 19,300 put. अगर इसके नीचे हम लोग देखते हैं स्लिप होने लग गया, कंटिन्यू स्लिपिंग बिलो दिस, देन इट इज वी विल सी. जो लास्ट के 1 घंटा में हमने पुट राइटर देखे थोड़े आते हुए 19,250 पे, 19,200 पर, इन पर जबरदस्त प्रेशर आ जाएगा. पागल तौर प्रेशर. अगर वो, बिकॉज दे हैव कम इन टुडे, दे हैव टेकन अ ह्यूज रिस्क एट लो प्रीमियम्स. पहले का राइटर दूसरा बात है, वो बड़ा प्रीमियम लिखा है, वो आराम से बोलेगा चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ आज और नेक्स्ट वीक. बट जो आज के राइटर आए वॉल्यूम में, उनको प्रेशर आ जाएगा. एंड दिस माइट देन below this level. I need at least 40 minutes, 30-40 minutes below this particular level. अगर चला जाता है, then we might see another 100 points down. 100 पॉइंट्स दिख रहा है, वो 200 साइकोलॉजिकल होता है, वो फिर फोड़ के निकल जाएगा उसको. बिकॉज जिस तरीके का सेटअप दिख रहा है कि उधर में बहुत प्रेशर है उस लेवल पर. सो इट्स राइट नाउ फॉर मी फर्स्ट एरिया where you, as a put buyer or as a put seller, I will keep my eyes very very strict around that zone. और वहां पर डिसीजन लूंगा कि इसको और एग्रेसिव डाउनवर्ड खेलूं कि यार थोड़ा प्रॉफिट बुक करके रेस्ट ट्रेल कर दूं, छोड़ दूं, जैसा मार्केट है आज का. पर लॉन्ग साइड तो बिल्कुल नहीं दिख रहा. दी ओनली लॉन्ग साइड में अगर मैं कुछ देखूं तो लॉन्ग साइड नहीं है, जस्ट इट्स जस्ट टेलिंग मी दैट शायद और नहीं टूटेगा. जस्ट टेलिंग शायद और नहीं टूटेगा. which is similar to that 19,300 put is you can see this bank nifty का 44,000 का put. Okay, right now trading at 90. This level of 100 odd is like a wall. 110 odd is like a wall out here. So इसको अगर वो ब्रीच करता है, then yes, बैंक निफ्टी आपको 200 पॉइंट का मूव दे देगा. ऐसा है इस समय. सो इट्स राइट नाउ एट दैट किनारा पर है. टर्न नहीं कर रहा है, टर्न तो डेफिनेटली नहीं कर रहा है. आज तो बहुत डाउट है, आज सेटलमेंट रोल ओवर डे है, दुनिया भर का चीज है. तो अगेन लाइक जो लास्ट वीक का थीम था कि फिलहाल तो कॉल मत सोचो खरीदना और वो सब. पुट शॉर्टिंग इज very harmful to your Dangerous. financial scenario. So Yeah. it's either a put buy. I mean, put shorting naked is a extremely hard result. और प्रीमियम इतना लो है नीचे का पुट का. why do you want to do something? उससे वो खेलना है तो कोई जाके कहीं मटका खेल लो यार. entertainment वो सब, इस सब में स्ट्रेस बस्टर्स मत लो, अपने पूरा स्ट्रेस हो जाएगा. तो वही है मेरा. Absolutely. Absolutely. I think even Raj Bhai has the same view. Raj Bhai, आपका भी वही था. And the target, like, what I would say that, sir, the target given on the platform is also 55 for 19,300 put target. Final target जो team ने दिया है.
think that matches perfectly well. I think both the experts are on the same page. Both the experts are on the same page that do not buy put, do not buy. I'm sorry, do not buy call, and do not sell put. unless you're a hedge कर रहे हो, आपका पुट लिया हुआ है प्रॉफिट में, तो आप नीचे का एक पुट बेच के अपना लॉस को कैप कर दे रहे हो, तो दूसरी बात। नहीं तो बिल्कुल इस लेवल पर एकदम खतरेजनक काम है। बिकॉज Absolutely. सेटलमेंट डे ना, अगर आप देख लो सेटलमेंट डे जुलाई 27, if those who are want to see what a settlement day trend can do, please go and look at July 27th, the video. You will know how rapidly the move comes in the last hour on a settlement day. So you don't want to be on the wrong side today. You rather not be a trader today, or you stick to the trend on a day like this. Yeah, absolutely. राज भाई देखिए, दिनेश सर भी आपके साथ ही हैं, मतलब ही इज आल्सो ऑफ द सेम व्यू। उनका भी नजर 19,300 फुट पे है उनके पोजीशंस के लिए। एंड द टीम, द आई थिंक आवर एक्सपर्ट इन हाउस एक्सपर्ट राजदीपक सिंह इज आल्सो देयर। सो फिलहाल के लिए लेट्स वेट एंड वॉच। दिनेश सर, राज भाई से मैंने पूछा था, आपसे भी पूछ लेता हूँ। टुडे इज द लास्ट थर्सडे एक्सपायरी फॉर बैंक निफ्टी। सम स्पेशल डे फॉर बैंक निफ्टी, बिकॉज अभी से वो थर्सडे की जगह कोई और दिन पे एक्सपायर होने वाला है। सो एनी कुछ लास्ट में खुशकी देके जाएगा कि गम में ही हम मरेंगे? अब ये डिपेंड करता है कि आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है या पुट ऑप्शन खरीदा है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है। तो दिनेश सर, एनी क्रूशियल लेवल फॉर बैंक निफ्टी दैट यू सी? Yeah, 43,900 is very crucial, very crucial. It starts sustaining 30-45 minutes below that level. Then, like I said, that 44,000 port will start trading and sustaining above 110, 120, which is chaos for the bank nifty at that moment. So I would be very careful at that particular level. Usam, take that. And as we speak, there is some spike in Nifty. Nifty is holding 19,300. I think it went all the way to 19,310. Now we're at 19,380, 310 level again. And So put अगर value is Gaurav, if we talk about the upside today, exclusively आज का भी अगर हम बात करते हैं, तो you need a minimum 15-minute candle above 19,350, which is 40 points away right now. मतलब कोई एंगल से, मतलब I am talking about a 15-minute time frame. Okay. Yeah. उसके below मैं जाना नहीं चाहता हूँ, because then it talks about your bias totally. Yeah. So we don't want to go into a bias. We need to be neutral to the, what you call, hold our wishes, and we just stick to the chart. So chart is only saying that. Or one early indicator I'm telling you now, it is suggesting अगर by chance 115 candle closes below 19,290, अभी आधा घंटा है, आज का जो लो है 292 है, सो अगर 115 कैंडल उसके नीचे बंद हो जाता है बाय चांस, देन इट्स chaos. That's the earliest sign of further chaos in the market today. Okay, so right now the chaos, the fresh chaos will sink in only below 19,292. I think that is why fair enough to Rajbhai as well, that he did not. You can wait for 30 minutes ना, 2 घंटा और है उसके बाद मार्केट में, अभी कोई वो हड़बड़ इम्पल्स नहीं करने का. Just let that phase, let that candle start sustaining below that, then you play direction aggressive. I think credits to Rajbhai, the 19,000. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ राज भाई, आपने जो, हाँ आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। देखो गौरव, क्या है कि एक तो एमएससीआई वाली कहानी है जो उस पे मैं मतलब बोल रहा हूँ कि हो सकता है उसमें 90% ऑफ द थिंग्स हैव बीन ऑलरेडी प्राइस्ड इन. व्हाट आई स्टिल बिलीव इज नॉट प्राइस्ड इन इज योर इंडेक्स रीबैलेंसिंग, निफ्टी रीबैलेंसिंग. एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमने इस महीने, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट इफ एनीबॉडी हैज कम एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, इन दोनों स्टॉक्स में हमने एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन देखा है इस महीने. एक का मर्जर हुआ है और एक का डीमर्जर हुआ है, और इसकी वजह से अगर आप दोनों स्टॉक्स में आप ओपन इंटरेस्ट देखते हो, तो एचडीएफसी बैंक इज समवेयर 12 करोड़ शेयर्स, और आई थिंक 13 करोड़ शेयर्स. एक बड़ा मूव यहाँ आ सकता है. दिस इज योर 35% वेट ऑफ बैंक निफ्टी, 15% वेट ऑफ निफ्टी. सिंस मॉर्निंग अभी तक ये बिल्कुल फ्लैट है, मार्जिनल नेगेटिव दिखा रहा है.
बट आज से पहले जितनी भी वीकनेस आ रही थी वो एचडीएफसी बैंक के द्वारा ट्रिगर थी. टुडे एचडीएफसी बैंक इज नॉट showing sign of weakness. The second stock is Reliance. Reliance का निफ्टी में वेट है 10%. तो अगर एचडीएफसी बैंक और रिलायंस की हम बात करें तो हमारे पास 25% वेट होता है और इन दोनों स्टॉक्स में कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है. ये हो सकता है कि एक स्टॉक नीचे जाए एक स्टॉक ऊपर जाए निफ्टी में कुछ ना हो, बट वॉट एवर वी हैव टू डू वी विल कीप अवर बायस और माय व्यू इज टिल 230. If market isn't coming down by 230, that is fine. If market is moving in the same range, that is also fine. But after 230, I am not going to look at the Nifty from the option buyer perspective कि मैं call buy करूँ या put buy करूँ. I would be happy to buy both at 230 today. So that's what. No, that's fair enough, Rajbhai. And trust me, Rajbhai, fair enough on your part. And the way you like जो आपने बोला कि निफ्टी पुट नहीं लेना, you did not get tempted. Nifty put came all the way to 29 while you were speaking 19300 put. I think entry is very important and 25 is the best level and you did not let that thing come into your way. That is hats off to you because अगर कोई 35 या 40 पे enter करता तो wouldn't have made money anyway at this level. So it's better to for you. I'll wait for 230 to get any call from your end. Dinesh sir will see whether 115 for him, whether he'll let us know the chart क्या बोल रहे हैं at 115 depending on where does that 115 candle closes. So I think 115 and 230 are two next half an hour, and from there another 45 minutes is where which will become crucial in the market. So I think we'll revisit this at 115 and then at 230. So for now I'll just take some questions from the chat where someone is saying nahi टूटेगा, all bears will be trapped. Parag Saini, see, ऊपर में अगर 340 के ऊपर जाता है तो वी आर एनीवेज लुकिंग एट अ बुल सिनेरियो. अगर 292 के नीचे जाता है तो वी आर सीइंग एट अ बेयर सिनेरियो. राइट नाउ द सिनेरियो इज सेल ऑन राइज, सो देयर इज नो ट्रेड एज वेल. सो लेट्स सी क्या होता है. बुल्स ट्रैप होते हैं कि बेयर्स ट्रैप होते हैं. दैट विल बी वेरी फन, दैट विल बी इंटरेस्टिंग अराउंड 3 o'clock. Okay. Someone is asking Rajbhai, ICICI Direct gave call to buy, ICICI Direct called to buy 19,300 CE. Someone is asking in the chat. See, that could be more of a 4 or 5 rupees or 6 rupees sort of move के लिए वो call गई होगी because I am not present at the desk, so cannot communicate to those guys. But let me check it. 19300 call. Yeah. You just check it. Dinesh sir, can you see PEL 1100 call option? I think this is yep. That means for what? Which expiry? See, it can 19300 call can move up to 30-32 levels. I believe that is more of a jobbing jobbing recommendation which has been given. But again, from a directional perspective, because market is more of a sell on rise, so in intraday there could be many gyrations. So the analyst should be looking out that particular small up move up to 30. That's it. Dinesh sir, can you look at 19,300? Sorry, I'm so sorry. 1100 call option for PEL for September. What does the chart say? Yeah, just one sec. So the option chart I can see attempting to make higher lows, पहला string, दूसरा string चल रहा है. So as long as it's above. Sir, your screen is not visible. Sir, screen is not shared. Sorry. You can see it now? Gaurav, you can see my screen? Yes, sir. Yes. Yeah. So ये 15 minute उस put call का चार्ट है. यहाँ पर कोशिश फुल ऑन है कि ये हायर लोज बना रहा है यहाँ पर. सो अगर समझो बाय चांस 2350 नहीं होल्ड करता है, अब 2575 है, तो ये आई वुड कीप दिस एज अ वेरी क्रूशियल ट्रेल फॉर माई सेल्फ. 2175 कि उसके नीचे फिर से प्रेशर में आ जाता है ये वाला. बट स्ट्रक्चर वाइज यस, attempting to go up, and if it starts moving up from here, then we could get a decent move in this all the way till 40.
because structure is very good. So supposing एक panic bottom बनाता है, ऐसे bear trap set करता है अगर by chance, okay, let's just draw it and explain to you. So समझो ऐसा कुछ करता है, तो as long as it's holding this level, ऐसा कुछ करके turn करता है, then it has a potential to cover this gap out here. Then तब उसमें पोटेंशियल बन जाता है. बट अगेन यू नीड टू सी दिस लेवल प्रोटेक्टेड, और ट्रैक्शन ऑन द अपसाइड डेफिनेटली अबव 28. इसमें ट्रैक्शन स्पीड तब आएगा, यहां तक तो एटलीस्ट दिख रहा है 37. या Okay. Oh my God. Asif, can you just let us know what is your what you call uh, excellence bail nalco and sale में आपकी क्या position है? Then only we can help you guys. Um, Rajendran sir, this is a stream in Hindi and English both, so we are catering to both the users, so it will be a mix of Hindi and English both. Okay. So, okay, advised Bank Nifty 44 100 C call. Okay, Tazim, I think this is very clear from our experts, and that the market is not bullish. Market is bullish only above certain level, that is 19,350. So on call side, they are not comfortable on call side. They have maintained a negative view because the view. So if you see, I think Dinesh sir is showing 1944 500 44 100 call 100. opportunity, and it is going down only. So Okay. that is So, the so yeah, yeah. Gaurav, even if say bounce आता है बैंक निफ्टी में, because like I said that put is जब तक वो 44,000 put 110 के ऊपर नहीं जाता है, शायद डाउनसाइड मोमेंटम नहीं मिले. और अगर हमको अपसाइड भी देखना है, तो ये देखो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, विच इज द फास्टेस्ट टाइम फ्रेम भी है. एक वॉल, दो वॉल, तीन वॉल, इतने वॉल है. तो पहला वॉल तो इधर ही है 65 पर, इसका इतना बड़ा 5 मिनट कैंडल क्रैश हुआ है. ओके, सो एनी पुल बैक टू दिस लेवल ऑफ 65 विल अगेन सी प्रेशर इन दिस. सो अगर हम एज वी आर अप्रोचिंग दी व्हाट यू कॉल क्लोजर इन द नेक्स्ट 2 आवर्स, इसका आईवी क्रैश क्रैश होने और लगेगा. तो विच इज अराउंड कितना हुआ, 44,075 44,100 का लेवल हो जाता है फिर. सो थोड़ा वो एक वॉल है, इमीडिएट वॉल, वो भी 5 मिनट टाइम फ्रेम बात कर रहा हूँ, विच इज समथिंग बीइंग टू बायस्ड इन अ रीडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड. Right. Okay, I'll take some more questions. Uh, NTPC target given by ICICI Direct 240 a month back. However, the stock is not moving. Should we hold? Shweta, that is not a derivative call. So I think that is the any positional calls are a technical call and fundamental call as well. So right now we're focusing on the derivative call. So we'll not take that up. Okay. I am given stock. Geo Finance is not a FNO stock, so we won't be able to cover it. Okay. Axis Bank Limited option by 1000 C. Okay. Printing, this is whose recommendation is this? Please, if it's your personal recommendation, please stop it, because that is not the right, because you're not authorized to give such recommendation on the chat. So please avoid if you're giving a recommendation. So Shri, this will be covered. Just give us at least 15-20 minutes. We'll have the product guys from our product team. They'll explain the lower charges, lower brokerage schemes that ICICI Direct has. So you can have a look at it. Okay, if it's a ICICI Direct recommendation, that's okay. I thought it's from your end, because since like recommendation, it is better coming from the experts. So that is why I just said okay. Okay, we have Sautik. So viewers on the chat, Sautik Kumar. Sautik is a part of our equity product group. So any product related queries, Sautik will take up. You can tag him in the chat and ask him any questions if you want. So Sautik, you can take it up from there. Ibul Housing, okay. Dinesh sir, Ibul Housing Finance, a lot of people asking, so what does the chart say? And Raj bhai, इसके बाद आप अपना derivative view भी ले लीजिए. I hope it's not in ban, because Ibul is the Masiha, it's the what do you call, is the Ibul is the what do you call, is the Raja or the manager of the band stock in band फाउंडिंग group. मेंबर, फाउंडिंग Yeah, मेंबर, founding member. Yeah, this is what you have said on Saturday. I was not getting the word. Okay. फाउंडिंग मेंबर है बैंक ग्रुप का वो. ओके, 1 सेकेंड, आई बुल दे रहा हूँ, शेयर करते. जस्ट अ सेकेंड.
So large green candle, nothing to worry about in the lower time frame. Higher time frame में भी काफी smooth है. Ichimoku is suggesting next resistance around 260 इसका Ichimoku के हिसाब से. Trending smooth move है. रिस्क भी काफी नीचे है इसका. Any particular call, Gaurav, wants to be checked? No. Only just said IGUL housing. That's it. Okay, Raj bhai, Ashwin Sonagra, please do not spam, yaar. मतलब this is not right. Please not spam. Please not spam. Okay, Ultratech Cement Future. Raj bhai, Ultratech Cement Future. We had the positive view. We had given in our weekly derivatives. Yesterday, because of the settlement, we had booked it. Okay. Yeah, yesterday we had booked it because it was for the August series only. But otherwise, if I look at the entire pack, your cement stocks also, then I don't see there isn't much of negativity until this Nifty is reaching below 19,200. कि एक market में sharp sell off हो सब कुछ हो. This stock should do well. Leverage wise, there isn't much OI in the stock. On the lower side only, that is another positive for the stock कि कोई इतना बड़ा short या long build up ही नहीं आया है stock में. Almost a 1 year low leverage पे चल रहा है. So I would be very positive in the stock, not negative at least, that is for sure. अगर मुझे इंडेक्स की वजह से अपना व्यू इसमें चेंज करना पड़ेगा तो भी मैं 19,200 निफ्टी जब वो ब्रीच करेगा उसके बाद ही चेंज करूंगा, उसके पहले नहीं. Okay. That is fine. And Yeah. regarding to India Bulls Housing Finance, I think we were discussing here or somewhere. I am not sure. Sir, Somewhere. Raj bhai, एक second. I think Dinesh sir, I think you have some engagements for the day. Yeah. So, yeah. I would like to take a leave here today. Next मिलते हैं सैटरडे को और नेक्स्ट वीक. और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. आज बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत होइएगा. जो भी है कल से देखेंगे नया क्या ट्रेड होता है. एंड जस्ट मार्क योर लेवल्स. वेट, डोंट बी टू इम्पल्सिव इन योर ट्रेड टुडे. एंड दैट शुड बी द रूल ऑलवेज. थोड़ा आराम से. Okay. Everyone, Thank you, all the Dinesh sir, best. for making Bye-bye. it still for half an hour because I know you Yeah. had a very Yeah. engaging day today. Thank you so Bye. much. Always a Bye. pleasure. Yeah. Bye. Thank you, Dinesh ji. Thank you, boss. Thank you. Bye. Okay, हाँ राज भाई, इंडिया बुल हाउस. तो इंडिया बुल हाउसिंग जो है ना बैन में आ रहेगा. एफएनओ आई बिलीव कि ये कल या परसों में दोबारा से बैन में आ जाएगा. सो दिस स्टॉक कैन मूव डू वंडर्स फ्रॉम हियर. We had the first target of 200. It is at 205. We have to extend our target, and that could be somewhere close to 270. So whether one can buy it in F&O, I'm not sure. Whether one can buy it through call option, I'm not sure. क्योंकि इसका लॉट साइज वोलाटिलिटी दोनों बहुत ज्यादा है. अगर किसी को उस तरह से खेलना है तो बुल कॉल स्प्रेड टाइप की स्ट्रेटजीज फिर भी सेंस बनाती हैं, बाकी नहीं. परफेक्ट राज भाई. एक सेकंड मैं अपना चार्जेस सेट कर रहा हूँ. I'll take few more questions because निफ्टी वापस राज भाई लास्ट टाइम जैसे हुआ था जो आपने इसीलिए इनिशिएट नहीं करवाया. निफ्टी अब एक रेंज में 30-20 पॉइंट के रेंज में फंस गया है. 19,292 से लेके 19,315 इसी में वो है और यहाँ पे प्रीमियम डीके वापस चालू हो जाएगा. तो आई थिंक प्रिटी मतलब जो डिसीजन लिया है आपने इट्स प्रिटी commendable. Let us take some more questions from people. 19300C we hold suggested by our team. So Atul Nikam, it is suggested by the team, so you can hold it with the given stop loss. ठीक है. That's all I will say. Raj bhai, anything you want to add? हाँ नहीं, देखिए अभी अगर जब तक कि मार्केट में भी देखिए एक रेंज में चल रहा है, यहाँ पर भी ठीक है. एक रिकवरी कुड बी देयर अप टू 9330. So in that scenario, this call option can move towards 30-34 levels. So I don't think we are looking beyond that levels for market recovery. क्योंकि उसके बाद अगर जा रहा है तो मुझे भी अपना बायस चेंज करना पड़ेगा. मैं भी शायद पॉजिटिव हो जाऊं अगर 330-340 के पास स्पॉट जा रहा है तो. But for now, just keep the stop loss of the day low and hold the position. Okay, fair enough. Sorry, no response. Naresh sir, extremely sorry, I have missed your question. So could you just put it in the chat? I'll just take it up. What will you target for Maruti as it is multi-year breakout? GV Lakshmi ma'am, I think our chart expert Dinesh sir is not here. I'll still take it up from Raj Bhai. Raj Bhai, any view on
Deepika ma'am, lemon tree is one of the suggestions running from ICICI Direct. So our research head, Mr. Pankaj Pandey, is anyways bullish on these hotel space, especially lemon tree and EIH Hotel. EIH Hotel is a gladiator pick which is released by ICICI Direct team itself. So hotel spaces, we are bullish here. Okay. Okay. How do you buy or sell more than 1800 lots at one trade? You cannot buy more than 1800 lots in one trade. That is a trade freeze given by Nifty, by the index itself, by the exchange itself. So if you want to buy more than 1800, so you will have to put it in multiples of that for other for multiple orders of that. Also, we have a slicing tool. So I think Swatik, you can help him in the chat how to place order for more than 1800 quantity using the slicing tool that we have. Okay, Coforge 5,000 September put. Okay, Rajbhai, Naresh Oberoi is a very he attends every webinar that we host. One of our very what you call loyal viewers. So can you take his question? Coforge 5,000 September put लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर लास्ट वीक भी कोफोर्स पे डिस्कशन आया था एंड वी हैव सेड टू स्पेसिफिक कंडीशन व्हाई वी वुड बी पॉजिटिव हियर। इसमें जब ये ब्लॉक डील हुई है तो 26% प्रमोटर स्टेक हैज बीन बॉट बाय नॉर्मल गाइज, सो दैट बिकम्स अ फ्री फ्लोट। अगर किसी स्टॉक का फ्री फ्लोट बढ़ जाता है, मार्केट कैप तो सर सेम रहा 100 रुपए का 100 रुपए, लेकिन जो 30 रुपए का प्रमोटर था वो अब फ्री फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, तो अक्रॉस द इंडाइसिस में कोफोर्ज का वेट बढ़ा और उसकी वजह से इसमें बाइंग आई। तो एज ऑफ नाउ प्लीज डोंट लुक आउट फॉर द बाइंग पुट्स, इट वुड बी मोर ऑफ डेस्परेट बाइंग। इफ यू हैव बॉट पुट, बेटर टू एग्जिट राइट नाउ। अभी इसमें थीटा है, पैसा बनेगा बचेगा, बट एक बार तो अभी यहाँ पर और अपसाइड लगती है सर। अभी ये हो सकता है 56 5700 तक चला जाए, उस वक्त दोबारा से सोच सकते हैं कि पुट कौन सा लिया जाए, तब 5000 का पुट लेने का सेंस नहीं बनेगा। सो वी हैव बीन पॉजिटिव इन दिस कोफोर्ज। Okay. Suzlon, someone's asking, we do not, Suzlon is a non-FNO stock, Ashwin, but ICICI is security. On our Telegram channel, we had shared a research report from ICICI's research team, which was initiated 15. The target was 22. I think Suzlon has crossed 22, so the target has already been achieved. So I think if you have it, according to our research report, it is an exit because the targets have been achieved here. More than 50%, almost 50% upside has been captured in this stock. Okay, Prince Singh, Rajbhai, there is a recommendation of Axis Bank 1000 call option buy for September. Someone given by our derivative team. Someone asking, should we buy or should we hold or exit? Sir, because the other day stock has been given. See, the data changes every day, but the way call writing has been happened. So, from the recommendation point of view, we will not exit till our stop loss is getting triggered. But for me, I will. If someone hasn't bought, then I would avoid it right away. कि थोड़ा सा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द थीटा इफेक्ट अभी भी इसमें किसी का बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा होगा, 5 to 6 रुपीज एट द मैक्स, क्योंकि जो टॉप है दैट इज समवेयर अराउंड 22। तो इसमें मैं अभी एंट्री नहीं करूंगा। अगर किसी ने नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर ये चीज मुझे 10 के आसपास मिलती है इमीडिएट बेसिस पे, या स्टॉक मेरा 980 के ऊपर दोबारा से जाता है, 985 के ऊपर, लेकिन अगर ले रखा है तो जस्ट कीप फॉलो द स्टॉप लॉस एंड दैट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर एनी ट्रेड। Perfect. Next is okay, so SBI 580 call option okay, which September expiry 9 rupees. तो राज भाई बहुत सारे बैंकिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो विल यू टेक दिस अप? यू वांट टू टेक दिस ये अप? सबको मैं पूरे बैंक में, अगर आप, मैं मतलब बोलना चाहूंगा कि अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग स्पेस वाज द फर्स्ट लैगार्ड। अगर सीरीज के फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो इट वाज द ओनली बैंकिंग स्पेस व्हिच हैज अंडर परफॉर्म। अभी क्या है, आज एक्सपायरी है, आज के बैंकिंग का मूव मैं नहीं देखूंगा। समवेयर डाउन द लाइन आई बिलीव कि 44,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी सेटल होता है तो एक अच्छी एंडिंग होगी महीने की। अगर यही 43,800 के नीचे जाने लगता है बैंक निफ्टी, then I would be a bit worried. So again, today is not
the day where I will form a view based on today's move in the stock. Okay. So I'll just take it up in that way that viewers were asking for September expiry for stocks. I think we'll see it in the next session, that the next first week of September expiry when we come. Right now, our focus should be on this monthly expiry, and let us focus there for any index or any stock that you have, any stock option you're holding for this expiry. So let's stick to August expiry only, this monthly expiry. September we'll see from next Thursday. Okay, and it'll make life easy for our derivative expert as well. So Rajbhai, someone asking you on IDFC First Bank. सर इसमें आज मेरे ख्याल से अगर किसी के पास है ये तो एक राउंड प्रॉफिट बुकिंग का बनता है. ओके. यहाँ पर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाई नहीं करूंगा, चाहे वो, देखिए क्या रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक जो है एमएससीआई में इंक्लूड हुआ है, तो जो भी उसके लिए बाइंग आनी थी वो काफी हद तक आ चुकी. तो वेदर दैट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पीएफसी और दे आर 4 or 5 and HDFC EMC, there are few more stocks, 6 stocks I believe they are getting included in MSCI. तो उनकी वजह से जो बाइंग आनी थी आ गई. टुडे ऑनवर्ड्स there could be some weakness, some profit booking which we will see for a couple of weeks. So CMP, I am not going to buy any of those 6 stocks which have been included in MSCI. Fair enough. Fair enough. So Rajbhai, what we'll do is आपका 2:30 का टाइम है. I think 1:15 was Dinesh sir's time. 2:30 का मैंने ये बोला है कि 2:30 तक ये जो जितना थीटा जाना है जाए. Again, I will go with a zero sort of no stop loss. I will buy a strangle or a straddle. Okay. कि अगर मार्केट में मूव आता है I'll buy 2:30 पे. देखते हैं ना, मतलब दोनों कॉल और पुट बाय कर सकते हैं विदाउट ए स्टॉप लॉस. ओके. कॉल भी बाय करेंगे, पुट भी बाय करेंगे, क्योंकि वो उस वक्त जो डायरेक्शन होगा आई एम नॉट श्योर. ओके. ऊपर होगा या नीचे होगा. Okay. I think we have 6 more minutes. Okay. I would like to thank for assets hold yesterday. Okay, Atul Tripathi is asking, he due to MSCI rebalancing, he sold ACC future yesterday, and it is in decent profit right now. Should he hold or book? 2004.80 is the level, Rajbhai. So can you give any trailing stop loss or something for this trade that he has taken? Rajbhai? You can keep the stop loss somewhere close to 1980 spot. अगर मैं फ्यूचर में देखूंगा तो सेम he has sold 2004 पे बेचा है उन्होंने, तो he's in 2000 rupees profit. 2004 पे बेचा है. ओके, 2004 पे बेचा है. आई बिलीव जो पिछले 5 मिनट है, अगर बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग, तो मेरे ख्याल से 1990 शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर सितंबर फ्यूचर, राइट? I just ask him whether it's September future or which future, sir. Oh, okay. Okay, Gaurav Joshi, 2:30 p.m., 19,002 should you buy? That Rajbhai will say anyway, September future. That is September future. हाँ, तो बस ये जो अभी का ही है, हाँ, 5 मिनट पहले का हाई है सर. 1990 के स्टॉप लॉस लगाइए और इसको ट्रेल कर लीजिए. That's Rajbhai, important question. Mr. Ashok Sahu has sold 19,350 put option at 11 a.m. He is in loss. Should he exit or should he hold? 350 पुट ऑप्शन बेचा है. कितने में बेचा है सर आपने? अशोक सर, कैन यू टेल अस द प्राइस? At what price have you sold 19,350 put option and for which expiry also? As we speak, Dinesh sir's 115 timing and Nifty is near 296. He had said that 292 ke niche, if we get a 15-minute closure at 115, so we will see more panic kicking in, and Nifty is at 296 right now in spot. तो राजभाई, जो लेवल सर ने दिया था उससे 2-3 पॉइंट दूरी है निफ्टी. सो इफ यू सी अ क्लोजर, आई एम होपफुल कि मार्केट जो एक बार 250 दिखा दे before 2:30, because after 2:30 I am not going to buy मतलब play directionally. Yeah. Yes, Nifty is almost there to make a fresh low. So our
our experts saying to yes, Nifty has made a fresh intraday low. Atul sir, I think Ashok sir should exit it. That is what I think that's what your view would be because now Nifty has made a fresh intraday low. Hello, Rajbhai. हाँ हाँ. Okay, so Ashok sir, please exit that. You should please exit it. Okay, Bhel. So viewers, I think it is 1:12. We'll wait for 3 more minutes. Let's see what happens. Then we'll take one trade from Rajbhai because Nifty is now at 287 in spot and future it is below 270, Rajbhai. Yes, yes. So your eyes on is your eyes letting up on 19250 put by any हाँ chance? Please हाँ let हाँ. us know. Basically, I will play only ITM strike. Today, I will not play OTM. Okay. So हाँ, it is today I ITM will na? not play. 268 is ITM 250. 300 is ITM. That is ATM. Sorry, yeah. I'm so sorry. I'm so sorry. So 300 ही देखेंगे आप 44 पे है तो 55 rupees was the target on the platform. I think आप उसके लिए wait करोगे. We'll see. नहीं, Nifty देखो is at 283. अब देखो Rajbhai, it is लेकिन not stopping. It is the पॉइंट्स. panic. I think the यस. level which Dinesh sir gave 292. If that is broken at 115, we'll see more panic coming in, and that is what is happening. We are seeing panic coming in, and Nifty is at 284, seeing days low. I think that was a spot on level, perfect timing के साथ जो level दिया था. गौरव, अगर तुम ध्यान दो ना तो जो हाँ. उस वक्त का जो हाई था समवेयर अराउंड 4495, राइट? हाँ. हाँ. आज इस कैंडल का भी सेम हाई है. Yes. और इस बीच में इसने जो है पूरा का पूरा 12:25 से ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट उसने उसी रेंज में बिताया है. Yes. नीचे की तरफ 30, ऊपर की तरफ यही 40, इस कैंडल में मार के 45 किया है. Yeah. तो अब तो अगर ये निफ्टी यहाँ पर रह रहा है ना, तो हमारा मेरा जो स्पॉट का एटलीस्ट टारगेट है कि हम लोग एक बार 19,250 की तरफ आए. दैट इज वेरी मच लाइकली. yes 100% and premium is moving. I think premium is at 44 again 43 44. That's perfect. So Rajbhai काम करते हैं आप और मैं एक लंच ब्रेक ले लेते हैं. We have Sumit from our product team. So a lot of people had a lot of product related questions. So Sumit, are you there? Yes, Gaurav. Yes, I'm there. Yeah, Yes. So great. the session is over to you. Me and Rajbhai will take a half an hour or 45-minute break. We'll come back by 2 o'clock, and at from 2:30 we'll see Rajbhai के straddle and strangle जो buy करने का कह रहे थे. So over to ठीक you, है, Sumit. sure, Thank sure. you so much. Thank you so much, Rajbhai. Viewers, we'll come back at 2 o'clock. Raj Deepak Singh and me we'll come back at 2 o'clock. Till then, Sumit, over to Sumit for any product related queries, and he has some product to display as well, which will be beneficial for you guys. So yes, Sumit, over to you. So great. Thanks very much, Gaurav. I heard you that there was a question regarding because the person he wanted to um, uh, you know put Slicing, 18 yeah, 1800 more than yes, 1800 yes, quantities in yes. Nifty and everything. So I'll just give you a demo of exactly how to do that using execution algos. So just allow me a few minutes and I'll share my screen. I believe my screen is visible and okay, fine. So I'll just show you exactly how it is done to start with, and then probably I'll be taking some other questions as well. So first of all, there was a question, so I'll just repeat it. So there was a question that if you want to go beyond 1800 quantities in your trade, so then we have this algo called execution algos. All you need to do is just click on FNO, go to smart tools, then click on the execution algos. Once you click on execution algos, we have like four different algos available here. The first is called as time weighted average price order slicing. The other one is called as time weighted average price band. Third one is averaging, and the fourth one is scalping. So for the people who want to go beyond 1800 quantities and they want to use this algo to slice in intervals, you can use this as an order slicing. So I'll just show you how it is done. You need to click on go. Just unskip this. Let's say you want to go with Nifty. Nifty it's 19500. Let's say 19200.
let's say 19500, 19200 किधर गया, यहाँ पर है. Okay, 19200 का call, let's say you want to buy, and quantity आपको 1800 चाहिए, right? So 1800 is what is here. आपको टाइम इंटरवल यहाँ पर डालना होगा, let's say a minute, 1 minute, and 1 minute, that's it. Slicing, so maximum quantity, let's say आपको 10,000 करना है, sorry my mistake, 10,000 आपको buy करना है, and the slicing quantity you need to put here is 1800. So आपका start time and end time is self explanatory, you can do that. All you need to do is just submit. तो इससे क्या होगा कि immediately at the market price, whatever the market price is happening, 1800 quantities will go at this particular price, and then after every single minute, another 1800, another 1800, another 1800 can go. अगर आपको इसको छोटा करना है तो you can go with 00 and 05 seconds, let's say आपको 5 सेकंड का टाइम रखना तो you can put 5 सेकंड का टाइम as well, and then you can keep shooting this 1800 quantities in the system. Now this was something that you will do using algo. अगर यही चीज को अगर आपको सेल भी करना है तो you can do exactly the same thing. Just click on sell. अगर आपको सेल करना है 1800 quantities every 5 seconds, you will keep selling, and the system will keep shooting this 1800 quantities in the every 5 seconds. There is another I'll go back with the price band. तो इसमें क्या होगा, it's the same first algo, but with respect to the price range. आपको कौन से प्राइस में आपको करना है. Now let's take the same example. Nifty 19 250 हम लोग देख रहे थे, right? It's 200. Let's go with 200, 250. मुझे ये सेल करना है, क्वांटिटी मेरा 10,000 है, स्लाइसिंग क्वांटिटी अगेन 1800 है, एंड देन प्राइस रेंज यहाँ पे 32 चल रहा है. तो मेरे को से सेल करना है कि ये 30 और 35 के, सॉरी 35 और 30 के बीच में अगर ये रहेगा तो इट शुड कीप सेलिंग, उसके बाद इट विल स्टॉप. तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आप 5 सेकंड्स रख देते हो, let's say, तो every 5 second it will try to first identify whether it is within this range, 30 and 35 के रेंज में है, और अगर 30 35 के रेंज में है तो it will keep shooting the 1800 quantities in the system. If not, then it won't. वैसा उसमें होते रहेगा, ठीक है. तो so the first algo that I showed you was simply slicing algo, जहां पर आप use slices, put slices in 1800 quantities, and the second में it is giving you an option to put a price range here. So आप price range डाल सकते हो, and then you will be able to put you know the slices accordingly. उसके बाद we have another one called as averaging. Averaging is nothing but if you have chosen a direction, suppose आपको ऊपर की तरफ जाना है and you wanted to keep averaging, यानी कि 100 rupees का अगर current market price है, and if you wanted to keep buying after every 1 rupees, so let's see, I'm just showing you very quickly कि क्या हो रहा है. Just a sec. Nifty 200 300, let's say 300 का कॉल देखते हैं हम लोग. तो इसको अगर आपको स्लाइस करना है, समझो आपको 10,000 quantities टोटल बाय करनी है, बट यू वांटेड टू स्लाइस वे अप विद एवरी 1,000 quantities. कौन से उसमें है, बिकॉज यू नो दैट व्हेन मार्केट विल इफ इट टेक्स अ टर्न, देन ये 10 रुपए वाला 20 30 25 50 रुपया होने का चांसेस हो जाता है इफ इट टेक्स द टर्न. बट आप लोग के पास इतना टाइम होता नहीं है कि इसको हर बार 1000 क्वांटिटीज अगर मेरे को बाय करना है आफ्टर एवरी 2 or 3 रुपीज, तो आपको टाइम नहीं मिल पाता है. तो इसमें दिस एल्गो कम्स बैक रियली वेरी हैंडी. आपका स्टार्टिंग प्राइस आप यहाँ पर डाल दो कि आपको 11 रुपए जैसे ही क्रॉस करेगा, यू नीड टू बाय 1000, एंड आपका स्टार्ट टाइम एंड टाइम हो गया. आपका एवरेज एंट्री डिफरेंस आप यहाँ पर डाल दो 2 रुपया. तो every 2 rupees upside it will keep shooting 1000 quantities, and then of course there is a possibility that there may be a slippage. तो वो आपको कंसिडर करके चलना होगा, बिकॉज मार्केट इज, यू ऑलवेज नो, बिकॉज during expiry week it tends to go wild.
सो स्लिपेज होने का चांसेस होता है। तो बट अगेन स्लिपेज जहां तक आप ऑर्डर मैन्युअली एंट्री करोगे, जब तक प्राइस निकल जाता है, एटलीस्ट दिस एल्गो इज मच बेटर देन द गोइंग मैनुअल बेसिकली। तो आप ये कर सकते हो। सिमिलरली ऑन द सेल साइड, अगर आपको सेल करना है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, यू कैन कीप डूइंग दिस, यू नो लेट्स से एवरेज प्राइसिंग स्टार्ट इज 11 रुपीज, नीचे एक रुपया अगर नीचे आ रहा है, यू कैन कीप एवरेजिंग नो डाउन साइड, तो एक रुपया नीचे आएगा एंड इट विल कीप शूटिंग 1000 quantities and so on and so forth. ठीक है, so that was regarding this averaging. Now scalping is altogether different. Scalping is meant for the traders who wants to get in and out of the trade very quickly and very oftenly. So ये एल्गो में आप चीज कर सकते हैं, वो भी लेट्स से निफ्टी अगेन, निफ्टी 19 300 का मैं पुट ले लेता हूँ इस बार। ठीक है, तो मुझे मार्केट नीचे जा रहा है, मुझे बाय करना है। अगेन लेट्स से 1000 quantities is going to be my maximum quantity that it will trade. मेरा स्लाइसिंग क्वांटिटी लेट्स से मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा स्टार्ट प्राइस मैंने डाल दिया। एवरेजिंग डिफरेंस एंड एवरेज एंड टेक प्रॉफिट डिफरेंस इज रियली वेरी क्रिटिकल हियर। तो लेट्स से मेरा एवरेज एंट्री डिफरेंस इज 3 रुपीज एंड माय टेक प्रॉफिट डिफरेंस इज 5 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि बिकॉज मैं बाय कर रहा हूँ, तो अभी करंट मार्केट प्राइस इज लाइक, तो लेट्स से आई स्टार्ट एट 40 रुपीज, 40 रुपए पे चालू करूंगा मैं, तो 37 आएगा, इट विल बाय 200। 37 माइनस 3 इज अगेन 34, इट विल बाय अगेन 200। बट अगर 34 से अगर वो 5 रुपए ऊपर जाता है, विच इज 39, अगेन इट कम्स बैक, विच इज 39 अगेन, तो 39 आने के बाद दी 200 क्वांटिटीज इट हैज एक्यूमुलेटेड विल गेट सोल्ड। ठीक है, तो दैट विल गेट सोल्ड। उसके बाद वो 39 से अनदर 5 रुपीज इफ इट गोज अपसाइड विच इज 44 रुपीज, देन अगेन द 200 क्वांटिटीज दैट इट सोल्ड अर्लियर विल बी स्क्वायर्ड ऑफ। तो आपका प्रॉफिट बन रहा है उसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे टेक प्रॉफिट का दिया है, एवरेज एंट्री का दिया है। लॉट्स ऑफ कस्टमर्स आर आस्किंग कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं दिया हुआ है। स्टॉप लॉस में when you go buy, stop loss, because you are scalping, you are averaging it down, downside आप कर सकते हो। तो जैसे ही 3 रुपए नीचे आ रहा है, you will just keep accumulating it, and then थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा तो it will start squaring off. As you know, मार्केट एक सिंगल लाइन में तो नीचे जाता नहीं है, it always go in a zigzag manner. So वो हमेशा उसी तरह से जाएगा, और जब भी वो नीचे जाके थोड़ा सा ऊपर आएगा, it will try to book the profit in this case. ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस स्कैल्पिंग अल्गो ऑन द बाइंग साइड। सिमिलरली आप सेल साइड में भी कर सकते हो। अगर मार्केट आपका नीचे की तरफ, सॉरी, you want to sell, and it will keep selling on the upper side. So 35 36 है प्राइस चल रहा है, या 40 पे चालू किया मैंने, तो 43 जैसे होगा it will sell, 46 होगा it will sell, 49 होगा it will sell the 200 quantities till the 1000 मैक्सिमम क्वांटिटीज रीच। अगर ये इसके ऊपर चले जाता है, आपने 1000 क्वांटिटीज बेच दिया, एंड देन आफ्टर मार्केट इज स्टिल गोइंग अपवर्ड्स, इट वोंट सेल एनीथिंग, it will remain in the system, it won't sell anything basically. जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, the last price it sold was let's say 55 पे उसने सेल किया, let's say, so 55 के बाद जब वो 5 रुपए और नीचे आएगा, यानी कि 50 पे, it will try to square the top, तो वो बाय कर लेगा उसको। So that's how it works, I mean, in this algo. And this algo is really very good because we have a good success rate from the customers, people using these days. So of course, try with, if you want to try, when you're trying for the first time, try with minimum lots that you can go with. So max open quantity 100 rakh do, and then with the nifty, if you're trying it, try to go with 50 quantities here. Okay, so that's how you can try and play with it. So this was regarding the the algos, execution algos. It all started with the slicing, and that's how you can play it.
Now recently we have actually launched predefined strategies with the basket order. Lots of people, they struggle to create strategies. तो क्या होता है इसके अंदर के we have created predefined strategies. All you need to do is just click on smart tools, then click on basket order. basket order पे click करोगे, then you will see this button called as quick start. तो क्विक स्टार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यू विल सी ऑल दी स्ट्रेटजीज अवेलेबल हियर. तो अब अगर आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी बनानी है, यानी कि बुल कॉल स्प्रेड है या सेल पुट है, बुल पुट स्प्रेड है, बाय कॉल कॉल फ्रंट स्प्रेड एंड ऑल दिस काइंड ऑफ बटरफ्लाई, शॉर्ट स्ट्रैडल, ट्रायंगल, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. तो ये चीज आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगी एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट अ स्ट्रेटजी. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन बुल कॉल स्प्रेड. मैंने इसको क्लिक कर दिया. 31 है. यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एक्सपायरी पे ऑफ क्या होगा. यहाँ पर देख सकते हो. यहाँ पर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट, यू विल बी एबल टू सी इट. आपके पास कितना लिमिट अवेलेबल है आप वो देख सकते हो एंड देन यू कैन क्लिक ऑन डन. जैसे आप डन करोगे, इट विल आस्क यू टू क्रिएट, give some name. I'm just giving arbitrary name, and then here you will be able to see कि आपका strategy क्या है, and just click on include open position in case you already have a position, so that the margin benefit you will be able to see. तो अभी इस strategy को मेरे को trade करना है, तो I'll need 21,600 rupees, 6,500, 6,005 rupees, 21,605 rupees in my account in order to trade this. थोड़ा सा बफर समझ के आप इसको थोड़ा 22,000 ही समझ लीजिए. 22,000 आपके अकाउंट में है तो you'll be able to trade this particular strategy. आप इसको सेव करना चाहते हैं, सेव कर दो. आपको पे ऑफ एनालाइजर में जाके आपको उसका एनालाइज अगेन करना है. यू कैन एनालाइज एंड और यू कैन सिंपली प्लेस ऑर्डर एंड देन इट इज डन. Okay, so these were the two tools that I wanted to show you. And the other thing is that the same the tool is now actually execution algo is also now available in equity side as well. So मैंने तो अभी आपको features and options के हिसाब से बताया था, but if somebody is interested in going with the equity, they can you know, F&O में भी आप जाके कर सकते हो, equity भी कर सकते हो and so on and so forth. So these were the two tools that I've showed you. Third tool, flash trade, बहुत लोग को पता ही होगा. Again, this is a scalping. This is meant for the scalping traders. So somebody is asking, so slicing can't be more than 1800. So this is a regulatory requirement. So with regulations we cannot go beyond 1800. So that's why this slicing आपको 10,000 हो या 20,000 हो या 30,000, जो भी आपका maximum quantity आप वहाँ पर डाल दीजिए, and then 1800 is the maximum that you can put in the slices, and then you can send the orders through. So आप कर सकते हैं. Brokerage on flash is 7 rupees per order. You need to go and subscribe to it. You need to do a registration and 7 rupees per order. And when I say per order, it means that 20 rupees, sorry, 7 rupees on the buying side and 7 rupees on the selling side, irrespectively whether you buy 100 quantities or 200 or 500 or 700 or 1000 or 2000 and so on and so forth. तो जितना भी जिस ऑर्डर में आपका जो क्वांटिटी होगा वही क्वांटिटी में आपको ये होगा 7 rupees देना पड़ेगा आपको. But important is that you need to register for it. ₹7 for execution algos as well. Yes. So the slices that you send out, so 18 in the previous example that I gave you, 10,000 आपको buy करना है, for example 10 या 15,000 या 20,000 whatever it is, 1800 के हिसाब से when you will buy, तो 1800 quantities when you will try to buy, तो उसको it will the brokerage will be 7 rupees only for that particular one. Can I explain one click F&O? Yeah, just quickly. So all you need to do is just click on F&O, then go to smart tools, click on one click F&O. Raj Deepak sir was earlier mentioning how to go about it, but let me just show you again. Click on view recommendations. Now here Raj Deepak and his team, they come up with the strategies. So in the morning they came up with some strategies on the Axis Bank futures, Nifty sell, short straddle Nifty का दिया था. This was around 9:29 in the morning. तो आपको शॉर्ट करना था. आपका स्टॉप लॉस विल बी 90, टारगेट विल बी 20, एंड द मार्जिन रिक्वायरमेंट इन दैट केस विल बी 222. आपको सिर्फ ये करना है कि आपको प्लेस ऑर्डर करना है. अब जिस वक्त दिया था उस वक्त में क्या प्राइस था आई कांट रिमेंबर, बट
ये आपको यहाँ पर से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन submit. If you don't want to go with just one quantity, just go to edit. You will be able to change it to, let's say आपको 500 quantities करनी है for example. You can change it, you can save it. You want to go limit order, the price that you want, and then अगर आपने कुछ change किया है then it becomes a custom trade. तो जैसे ही आप इसको trade करोगे तो this will become a custom trade because this is not something that was um, recommended by the the analyst. तो इसमें आपने थोड़ा भी change किया है तो it will become custom because it is something that you are creating on your own. एक बार आपने ये बना लिया, आपने save कर लिया, and then if you trade it, you will be able to see everything in the one click F&O itself. आपने जो भी position लिया है, आपका क्या position का P&L चल रहा है and all, you will be able to see it. But at the same time, you will be able to see it in the open position as well कि आपका क्या P&L चल रहा है and all. तो आप कर सकते हो. Slicing brokerage for each order, yes. ₹7 जो मैंने बताया, it will be for each slice basically that goes through the system. How to put a notification on the index calls that are given in one click F&O. Notifications में आपको WhatsApp को आपको रजिस्टर करना होगा. आप यहाँ पर जाइए, आपको काफ़ी कॉल्स मिलते हैं. आप यहाँ पर आने के बाद मैनेज सब्सक्रिप्शन पे आइए एंड देन यहाँ पर आके आप रजिस्टर कीजिए एसएमएस प्रीपेड व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन. व्हाट्सएप पे भी काफ़ी कुछ मिलता है, रिसर्च रिकमेंडेशन का अलर्ट आता है यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा वो चीज़, इन्वेस्टमेंट आइडियाज एंड एवरीथिंग. तो ये डेली बेसिस पे आपको मिलता है. आईसीआईसी के उसमें आप आ जाओगे and then you will be able to get the information on ICICI Direct investment idea. जैसे कि आज मॉर्निंग में दिया गया था, buy L&T Finance Holding Limited at 126, target was 140, stop loss was 115, holding period was 30 days. So these kind of the investment idea आपको मिलेगा वहाँ पर. So you will be able to do that in that case. Just a sec, let me just go back to the system. इंडेक्स रिकमेंडेशन नहीं आता है वहाँ. ओके, सो अगर नहीं आ रहा है, यू मीन टू से फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑल, आई विल see that राज दीपक को बता देते हैं, so it will come on that as well. But in the meantime अगर नहीं आ रहा है तो you can come here and you can check here on one click F&O. तो यहाँ पर तो आपको मिल ही जाएगा व्यू करंट रिकमेंडेशन. तो यहाँ पर जो भी रिकमेंडेशंस जो दिए थे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे. यहाँ पर आपको ये भी मिल जाता है कि एग्जिट हुआ है, पार्शियल बुक प्रॉफिट हुआ है या स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड ऑल. यू विल बी एबल टू सी दैट एज वेल. तो ग्रे आउट हो गया, यू वोंट बी एबल टू ट्रेड दैट, बट द वंस दैट आर ओपन यू विल बी एबल टू ट्रेड इट एंड यू विल बी एबल टू place order in that case. If I choose to change plan, will my new plan will still be active? I doubt because आपने plan change किया है तो नहीं. And the brokerage again will be charged according to the plan. ठीक है. Where do I get put call ratio? So put call ratio के लिए we are actually working on that, where you will be able to get this put call ratio very quickly at the moment on our website, but you can still calculate it very quickly. आपको यहाँ पर जाना होगा, strategy builder पे आपको मिल जाएगा. All you need to do is just compute all this at the bottom and then take a ratio of it. तो उसका जो put call ratio रहेगा, you will be able to get it very quickly in that. GTT order not working. Sir, GTT order I believe is going to go live this weekend, so you will be able to use it. At the moment, it is just it will be made available soon to you probably this weekend. But again, it may take some time. So let's see when it is live for the customers, you will be able to use it. फिर उसके बाद how can I increase the size of my favorites? Sir, अभी यहाँ पे तो it's like 4 or 5 favorites is what I believe you can add. So अगर आप यहाँ पर आते हो, let's say Nifty,
बैंक निफ्टी को मैं ऐड करता हूँ. एडेड. ये 3 मैंने ऐड किया है. That's how you can add. At the moment, sir, this is the limit that is available, and I don't think so you'll be able to add more on top of this, because these are the ones that normally people, this is just to give you a snapshot of what is happening over there. Yeah. How to track algo trade. Just a sec. Shivaram Bhattacharya, why transition charges is high in flash trade? Sir, flash trade mein it is all 7 rupees. You can clearly see trade options are just rupees 7 rupees via flash trade. All you need to do is just click on scroll and add on plans, and you will be able to do that. So 7 rupees, it's not really very high. um, um, Nifty में अगर 50 का quantity if you are trying to buy it, and if you make even 50 पैसा, so roughly around 25 rupees is what you are making. अगर मैं 7 रुपया बाइंग और सेलिंग करता हूँ तो 14 रुपया वो, एंड देन STT एंड ऑल रफली अराउंड 20 rupees, तो स्टिल यू आर मेकिंग 5 rupees प्रॉफिट with just 50 paisa profit on Nifty. So I mean, and I believe lots of people, they don't just trade one lot. I mean, they will trade at least 2 3 4 in multiples of that. तो वो चीज़ काफ़ी छोटी हो जाती है brokerage in that sense. So this will really help you, and this is specifically for the people who want to buy calls and puts, rather than selling, because it will help you get in and out of the trade, and at the same time you have low risk while you are buying it. So yeah. Can we enter Bank Nifty 44,000 puts? Sorry, sir, I'm not the one who can recommend this. Soon, Raj Deepak will be in the session, and he will be able to recommend it, because he must have gone out for the lunch, right? So once they're back, he'll be able to recommend you what exactly needs to be done. Can you come again? How to select WhatsApp address? Sir, all you need to do is just click on the settings, manage subscriptions. आप यहाँ पर आइए WhatsApp पे, and I would recommend to go with all these as well. I mean, mailer, SMS subscriptions, prepaid, prime and subscription. I mean, these kind of subscription, just उस पे करो. I mean, you will get something. You will, something or the other, you will get the idea. I mean, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है मार्केट में, कुछ ना कुछ चल रहा है. Some news are there, bulk block deals, कुछ ना कुछ तो आपको पता ही चल जाता है, which will help you in making your trading decision. So इसको subscribe करके रखो. You will get quite a good information. uh, there will be lots of information, but don't consider it as a spam or anything, because these are the information that we give out to you for your own benefits. So अगर आप उसको regularly follow कर रहे हैं, you will get the information के कैसे क्या चल रहा है and all. How to track algo executed trade. So एग्जीक्यूशन अल्गो में जब आप जाते हो, तो यहाँ पर whenever you place a trade, यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि आपका अल्गो रुका हुआ है या चल रहा है. आपका जो एल्गो ऑलरेडी रनिंग है, जिसका ऑलरेडी ट्रेड्स हो गया, वो दिखाई देगा आपको. तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स एंड ऑल एक्शन सब बटन दिखाई देगा. यहाँ पे फिनिश में आपने जो जो एल्गो फिनिश कर दिया है, वहाँ पर ये यहाँ पर दिखाई देगा. तो ऑल यू नीड टू डू जस्ट क्लिक ऑन अवेटिंग रनिंग एंड फिनिश्ड. रनिंग में आपको पूरा उसका डिटेल दिख जाएगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वहाँ पर एक बटन भी आ जाएगा एल्गो लॉग्स. व्हेन यू क्लिक ऑन एल्गो लॉग्स में आपको पूरा डिटेल दिखाई देगा कि आपका कितना आउटस्टैंडिंग खड़ा है, कितना क्या है, और every single trade that happens, you will be able to see it on this running page. ICICI निफ्टी फ्यूचर में ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा है, इस कम कराइए. बाकी सर निफ्टी फ्यूचर्स में ब्रोकरेज, सर फ्यूचर्स इज फ्री आई गेस. एक मिनट को, कम ज़्यादा है. बाकी सब में मेरा 20 रुपया है बस. निफ्टी फ्यूचर्स में बहुत क्या. So Nifty futures is free. I mean, futures trading is free. I mean, it's zero at the moment. तो 20 रुपीज आप जो बात करो, मेरे ख्याल से ऑप्शंस की बात कर रहे हो. तो ऑप्शंस में इफ यू ट्रेड यूजिंग फ्लैश ट्रेड एंड एग्जीक्यूशन अल्गोज, इट विल बी 7 रुपीज. बट इफ यू ट्रेड थ्रू नॉर्मल प्लेस ऑर्डर पेज, you will be charged 20 rupees in that case.
from the buying perspective and the selling perspective. Can we integrate Breeze API with a third-party API like Tritron? Um, it's up to you, sir. Breeze API is open for retailers. You can use it the way you want. You can, you know, all you need to do is just make sure that you have, the proper SDK where you can code it properly, and then you can. So I mean, it's up to you, sir. Yes, if it allows you to do that, yes, you can do it. What are the parameters on opening range breakout algo? So you need to go through these um, the spring algo. So over there you will be able to go and see के opening range breakout का जो details है. Just click on details, and you need to go through the details कि इसमें क्या है क्या नहीं है, and you will be able to see how it works. Sorry. Yeah, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, you can even back test it, and you can even start trading directly on this opening range breakout on the spring algos. um, so these are all algo trades are all approved by the exchange. So whenever we give all these algos that are available on our platform, these are all approved by exchange. So we go to the exchange and we get it approved, and that's how we are allowing you to trade on these particular algos. So it is all approved by the exchange. So yes, um, so that's what it is. So at the moment, you can see the Nifty is like 317, 19317. It went down significantly, and then it has come up very quickly. And if you want to see that kind of stuff, you can come all the way to the my watch list page. यहाँ पर options traders लोग के लिए it is very good. You can click on option chain, and then on the option chain itself, you will be able to see कि आपका यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है निफ्टी का, एंड देन for all the live streaming of the options that you will be able to see here. At the same time, you will be able to see कि अगर आपने कुछ trades लिया तो you will be able to see it in orders tab, positions tab, अगर आपके पास कोई positions है, portfolio, and then if you want to see what the funds that you have available and you want to allocate it to something else, you'll be able to do it. तो यहाँ पर आप एक ही screen पे you'll be able to do everything in the trade. Now here you can see that the Nifty, after reaching a bottom of 19288, it has made a good candle of 15 minutes, and this is like a 15 minutes chart. अगर आपको at the same time, if you want to apply the Nifty का spot chart here, and at the same time let's say अगर आप 19350 के put में भी trade कर रहे हो, तो you can apply Nifty का put chart here as well, and then you can see कि इधर क्या हो रहा है. At the same time, if you want to go with 4x4 का matrix, यू कैन डू दैट. यहाँ पर आपने कॉल पुट का स्ट्रेडल लिया हुआ है, समझो कॉल भी लिया हुआ है एंड देन पुट भी लिया हुआ है. यू विल बी एबल टू सी इट कि क्या हो रहा है. यहाँ पर अगर आपको एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू सी बैंक निफ्टी, यू कैन सी बैंक निफ्टी एज वेल. मैंने ये निफ्टी कर लिया, यहाँ पर मुझे निफ्टी दिख रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी दिख रहा है, और निफ्टी का यहाँ पे मैंने स्ट्रेडल लगा लिया है इन केस इफ आई वांट टू ऑब्जर्व दैट. तो दीज काइंड ऑफ स्टफ दैट यू कैन डू इट. important thing is that you have to select the grid that you want to change it. अब ये निफ्टी का मैंने यहाँ पर डाला है, बैंक निफ्टी का है, अब ये 15 मिनट का है. if I want to change it to 5 minutes, I can change it to 5 minutes by clicking on this particular grid, this quadrant, and then I'll be able to change it. अब ये भी 15 मिनट का है, इसको मेरे को अगर 10 मिनट करना था, I'll be able to do it using this 10 minutes. एक ये हो गया, and then there is one more thing, the strategy builder, for the people who want to create strategies. अभी मैंने आपको flash trade, sorry, execution algos का बताया. Spring का there was a question, one click F&O I have showed you, basket order I have showed you. Then there is a strategy builder. Strategy builder में as soon as you click ना, you will get all the entire option chain here. Option chain में आके all you need to do is just click on the 19300 आपको समझो buy करना है, and उसके अगेंस्ट में you want to sell 19350. let's just
clicking a bull call spread because I can see that market is slightly going up, तो मैंने वो कर दिया है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा एंड हियर यू विल बी एबल टू सी डेल्टा कितना है, गामा कितना है, थीटा कितना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. जस्ट क्लिक ऑन एनालाइज एंड यू विल बी एबल टू सी द पे ऑफ चार्ट हियर. इसको मैं -5 to 5% कर देता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं ये लेता हूँ तो 1800 रुपये का मेरा प्रॉफिट होने का चांसेस है, 600 रुपीज़ का समवॉट अराउंड मेरे को लॉस होने का चांसेस है. तो इट्स लाइक 1:3 का रेशियो ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस साइड. एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू सी डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा का ग्राफ, पे ऑफ ग्राफ है, तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी इट. यू कैन सेव द स्ट्रेटजी अगेन विद द सेम नेम सिमिलर टू दैट. यहाँ से आप आइए, यहाँ पे आप ट्रेड कीजिए. इट विल टेक यू टू द बास्केट ऑर्डर वेयर यू विल बी एबल टू सी कि आपको ये ट्रेड करने के लिए कितना मार्जिन लगने वाला है. आपको यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करनी है, यू कैन चेंज इट. क्लिक ऑन व्यू मार्जिन एंड यू विल बी एबल टू सी कितना है. अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अगेन आई विल बी एबल टू सी कि 206 का, मतलब I will need something like that because I have some positions available right now. But if you don't, it will calculate it basically. Click on place order and you'll be able to use it very easily. Sorry, इसमें मैं एक और चीज़ बताना भूल गया. सेव स्ट्रेटेजी पे आप जैसे आते हो तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो लेवल का डेल्टा, गामा, थीटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा. People who would like to trade delta neutral, gamma, long gamma, short gamma and stuff, they'll be able to do it right here. यहाँ पे थीटा भी आपको दिखाई देगा कि आपके स्ट्रेटेजी में भी थीटा कितना बचा है and how much time is left basically with respect to it, and you'll be able to pocket this in your account. Edit करना है, you can do the editing by simply clicking here. Buy का, sell का, buy quantity change करनी है and all, you'll be able to do it here. So that's how it works. Can we save the multiple charts we created and can we use the same on the next day as well for the different stocks? Yes. So let me just quickly show you. Let's say मैं watch list पे click करता हूँ. Watch list पे click करने के बाद I have created let's say multiple charts of 4x4 का. निफ्टी है, यहाँ पर मैंने ले लिया let's say बैंक निफ्टी. यहाँ पे निफ्टी हो गया, यहाँ पे बैंक निफ्टी हो गया. यहाँ पे मैंने अब अगर आप ऑप्शंस का लोगे तो इट विल डिसअपियर बिकॉज टुडे इज एक्सपायरी डे, सो टुमारो यू वोंट बी एबल टू सी इट. but although you will be able to see it, but then it will be having nothing, no value because this is of 31st expiry. let's say मैं सितंबर का एक यहाँ पर चार्ट खोल देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, और यहाँ पर ये भी खोल देता हूँ. अब आपको यहाँ पर जाके ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर सेव, आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेव चार्ट लेआउट नेम, लेट्स से 4x4. सेव करूँगा. अब मैं कल आऊँगा या फिर मैंने कुछ और इंस्ट्रूमेंट लिया तो आई विल बी एबल टू सी इट फॉर दैट एज वेल. जैसे मैं अभी इसको हटा देता हूँ. मैं अगर यहाँ पे हूँ, अभी निफ्टी पे हूँ, मैंने एक ये लिया था लोड चार्ट लेआउट करूँगा मैं 4x4 पे, तो आपको ये आपका चार्ट दिख जाएगा. आपको सिर्फ यहाँ पर आना है, यहाँ पर आके आपको लोड चार्ट लेआउट करना है. दैट्स इट. सिमिलरली आपको, आपने अगर कुछ इंडिकेटर्स लगा के रखे हैं, लेट मी जस्ट शो यू क्विकली बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन दैट कीप्स पॉपिंग अप कंटिन्यूसली फ्रॉम द कस्टमर्स. इंडिकेटर्स है यहाँ पे, लेट्स से मैंने ADX लगा दिया है एंड मैं बॉलिंजर बैंड्स पे लगा देता हूँ. मैंने अगर कुछ ऐसा टेम्पलेट बना के रखा हुआ है एंड इफ आई वांट टू सेव इट, आप इसको सेव कर सकते हो, सेव इंडिकेटर्स टेम्पलेट, एंड इसमें आपको सिंबल, आप जो निफ्टी यूज़ किया आपको वो रिमेंबर रखना है एंड द इंटरवल, द टाइम इंटरवल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आपको रखना है, तो आप रख सकते हो. तो लेट्स से BB बॉलिंजर बैंड्स ADX मैं बोलता हूँ सिंबल, और ये रिमेंबर रखता हूँ मैं. हो गया. अब अगर मैं कुछ और सिलेक्ट करता हूँ तो भी मुझको दिखाई देगा. ठीक है. अब ये टेम्पलेट्स मेरा सेव हो गया है. अब मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ एंड इफ आई यूज़ इट लेट्स से फॉर ICICI बैंक, अभी तो मेरे को दिखाई दे रहा है, बट लेट्स से अगर मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से एंड इफ आई अप्लाई टेम्पलेट लोड इंडिकेटर टेम्पलेट, ये यहाँ पे ये लग जाएगा सीधा. ठीक है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका डायरेक्टली अप्लाई हो गया. सो वट एवर इंडिकेटर्स दैट यू हैव अप्लाइड ऑन इट, यू कैन डू दैट. ट्रेडिंग व्यू चार्ट विल स्टैक इन ICICI डायरेक्ट. सर आपका क्वेश्चन नहीं समझ में. स्टैक मीन्स व्हाट?
आप डेली ओएल आया करो, ओएल लाइव आया करो. ओके, so sir, um, uh, now that from September onwards every day will be an expiry. Some of the other expiry will be happening on every single day of the week. Sir, उतना possible नहीं है because we have other important the challenges as well and other important tasks as well to keep on doing. But Thursdays are the main expiries, but we'll see what we can do. At the moment, the plan is to stick with the Thursdays expiries, because these are the ones people have been following very quickly and everything. Yeah. So yes, um, Gaurav, are you there? Let me just look at the charts. What is happening with the chart right now? आप यहाँ पर open interest भी देख सकते हो. It will take a little bit of time to change because it is in lakhs. Because वो lakhs को change होने के लिए थोड़ा number of quantities उसका change होना चाहिए. So that's why it will take a little bit of time to change it. So अभी देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है. Market ऊपर नीचे नीचे ऊपर कर रहा है. You can see that it went all the way up to 19320 तक आया and then 320 को उसने break नहीं किया. So abhi again it has come down to 302. So let's see what is happening with this. What will happen, because it's just around 2 o'clock right now. Soon around 2:30 things will start happening, or even after 2 o'clock things will start go volatile. So Gaurav and Rajdeepak will be there soon with us. तो एक बार वो आते हैं then they will be able to recommend us कि कैसे हो गया. It should be log in multiple computers simultaneously. सर वो अलाउड नहीं होता है क्योंकि सेशन क्या हो जाता है कि आपके पास एक अकाउंट है, so you won't be able to log in through multiple computers. But what you can do is, आप यहाँ पर ये न्यू टैब में खोल सकते हैं. अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन हैं ऑन द सेम डेस्कटॉप, आप यहाँ पे इसको इसमें न्यू टैब में खोल लीजिए. आप इसको जैसा हम लोग दूसरे स्क्रीन में लेके जाते हैं, तो यू कैन ड्रैग दिस ऑन टू द न्यू डिफरेंट स्क्रीन एंड दिस पर्टिकुलर स्क्रीन यू कैन हैव दिस हियर एंड यू कैन हैव समथिंग एल्स, और यू कैन कीप डूइंग द अदर products that you are using or anything like that. So either आपको आप बना सकते हो, you can use it in the different screen from the same desktop, screen 1 screen 2 करके जो होता है, तो उसमें आप कर सकते हो ये चीज़ को. So but login from multiple computers is going to be surely no, because एक जगह से आप लॉगिन करोगे तो दूसरी जगह पे अगर लॉगिन करोगे तो it will log out from this particular session. So at the moment it doesn't allow that way. But yeah, we have this facility here. You can use it in the full screen mode. आप इसको मल्टी चार्ट लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हो, and then you can use it in a separate screen as well, if you have two screen 1 screen 2 available for the same desktop. Yeah, so मुरली, so यहाँ पे क्या है, my IPO revised amount is in still blocked, this is not unblocked. Flex is going to list tomorrow. Can you help me to get my amount? Tried to call customer support but no response. I had a request for the call back. Sir, आपको कॉल आ जाएगा थोड़ी देर में. एक बार फिर से एक बार ट्राई कीजिए सर. IPO is not my area where I can comment on that, but certainly will ask the guy to to get back to you. Surely the customer service team will get back to you in this case. Can you just, I believe I have already shown you the notification screen in case if you wanted to show. So आप बोल रहे हो, I already have a neo plan while requesting for a map to 7 per order pricing scheme. It is asking continue with the current plan or change plan. If I can choose to change plan, will my neo plan will still be active? Sir, आपका आप जिस प्लान पे आप चेंज करोगे, the brokerage will be applicable according to that plan.
because we have certain we have come up with a new pricing scheme as well, I believe. The prime plans we have come up with recently, where your brokerage is about 0.07%. लाइफ टाइम प्राइम प्लान हम लोग ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है. सो हियर आर द प्लान्स बेसिकली. 299 का प्लान है, 999, 199, 299, 4999, 999. So all these plans are there, and according to that, the पर इसमें आपको पर लॉट के हिसाब से फिर आपको चार्जेस लगेंगे. मार्जिन फॉर फ्यूचर्स, डिलीवरी कैश परसेंटेज, ई-एटीएम का लिमिट्स कितना है, एंड दी एमटीएफ रेट्स दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर दोज पर्टिकुलर प्लान्स. सो श्योर एवरीबडी वुड हैव गॉट दीज काइंड ऑफ मेलर्स. इसलिए मैं बोल रहा था कि आप मेलर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, तो यू विल बी एबल टू गेट ऑल दीज कम्युनिकेशंस वेरी क्विकली. उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, मैंने सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, एंड देन subscribe to all these the categories where you will be able to see all the details. um, um, has the cloud order option been removed? I don't think so. This has been, for some reason, I will get back to you on that cloud order thing. I have actually asked the concern team to include that again, because it's available on the mobile platform. So I'll get back to you on that. It shouldn't be removed basically. I can see that it is being, I can't see here now, but yeah, I'll come back to that. Your website keeps on hanging, particularly during big moves. This must be addressed. Doesn't happen with other trading platforms. Sir, extremely sorry for that. That our website hangs during the big moves. If you have specific screenshots and specific, the video for that, I would request you to please send it through the help desk, and we will be able to look into the details of exactly why that has been happening. Um, uh, it could be, there could be multiple reasons that can come across. So I would request you to please raise that question through the help desk, and they will be able to address your questions in that sense. um, so trading view chart will stuck in ICICI web also, also not as so faster. Um, Sir, it has been significantly improved. I know there has been a complaint, quite a lot of complaint in earlier days. We have worked quite hard on this improvement, and recently it has improved a lot. But if you're still encountering these kind of issues, please write to help desk. Here you can go and you can definitely write to help desk here. The You can try to help us here, contact us, and someone from that team will be able to connect you and will be able to sort out your questions quickly in that sense. Hmm. Market, I can clearly see that it is again going downwards, 293 after reaching 320. So yeah, is Raj back? So it's 2 o'clock now. Yeah, Sumita, I'm there. Okay, hi Raj. Yeah. So somebody was actually asking 44,000 ka put, whether they should enter in that. It was a bit. So I said once Raj is back, then he'll be able to guide you on that. So please, over to you now. Hello, everyone. Well, there were two takes input options. Both takes were limited to this 45 range. Okay. We have done well by not buying put. Yes, again, I haven't changed my view. Okay, market is more of a sell on rise. But this view is whatever I have shared with you is only till 2:30. Beyond that, I don't have the view for the day. I'm pretty clear on that. The reason being, there are
so much on the stake for traders today, particularly because of HDFC Bank demerger and HDFC Bank merger and Reliance demerger. So what I believe there could be a sharp up move or down move in the last hour of the trade, and I'm not sure which direction it would take. But somehow I'm getting a feeling that Bank Nifty is getting bottoming out. So I will not be going short in Bank Nifty till it is not reaching the previous lows. And why the reason why, despite spot Nifty has made a low. See, if anybody is looking at these charts, then see, uh, your spot levels have declined sharply, okay, but our options prices, they haven't increased. The reason was your futures premium, future hasn't declined much. So the previous decline was somewhere close to 280. The last one was up to only 265. So only 5 points further it has declined. So that's why your option premium, put option premium hasn't increased. Now, what we can do from here? So it is more of a very short term. Matlab, again, I'm just looking out for anything which can give us a short surge, whether in terms of option prices only. So I am a bit inclined towards getting into Bank Nifty, and if we can buy Bank Nifty put, so with a stop loss of somewhere close to, I would say 44,080 or 44,100, we can attempt put here in Bank Nifty. So let's see what we have given in our Greek derivatives also. Yes, I think this is the strategy we have. So yeah, 44,000 put has been given around 65 to 70. Okay. Now it is at 86. I'm inclined to buy put option. So I believe one can look at it at 74, which is a prevailing price. Yeah, 75. We can look at the Bank Nifty put somewhere close to 75. Yes, this is the level. My first target would be somewhere close to 125. So Bank Nifty with a stop loss of days low, which is around 53 rupees, 44,000 put we are talking about here. So I will keep my stop loss close to 54, and my target would be first target would be 125 Bank Nifty put. In Nifty, there isn't anything which I can see. It's there only, no move anywhere. Hello, Rajbhai. Yeah, Gaurav, you're back. Yes, I'm back. Yeah. Sorry, my lunch got extended by 5 minutes. So, Rajbhai, this market is again near that 300 level only. Yeah, that's And what I was telling that निफ्टी में कुछ नहीं हुआ अगर जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था that was the high of put 45 yeah, again. yeah, And since there it has came to 15 to 17 rupees. अगर मैं तो उस वक्त अगर देख रहा होता तो शायद मैं एक बार ऑप्शन बाई जरूर करता क्योंकि स्पॉट लेवल पे हम लोगों ने बात किया था कि 320 के आसपास मिलता है हमें, तो hmm, हम लोग जो है एक बार पुट ऑप्शन बाई करने का सोचेंगे. वो hmm, ऑलमोस्ट 320 के आसपास आया पुट ऑप्शन और वहाँ सॉरी स्पॉट और वहां से दे रहा है. तो right. हाँ, बट अभी मुझे क्या लग रहा है कि बैंक निफ्टी माइट हैज गिवन अस सम अपॉर्चुनिटी, तो मैंने अभी Yeah. 44,000 पुट Rajbhai, के. I'm switching my network, so I may get disconnected. Just a heads up. By chance, if I don't speak.
Raj bhai, am I audible? Yes, yes, you are. Hello? Yes, yes, you are. Perfect. Okay. So we'll come back to the analysis again. See, I Raj bhai, given data क्या बता रहा है? What is, we start डेटा with data इज, first, then मतलब we come to देखिए, the, मैं अभी yeah. फिर से एक बार बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा वेदर आई गॉट माय स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड और नॉट, बट this strategy is only for 230. After that I will not look into Okay. market as an Okay, you're given a strategy. yes, yes. Okay, what No, is the at strategy? 230 we I will am talk late, about the so strategy. See, okay, डेटा ये बता रहा है कि 230. Okay. 44 कॉल में राइटिंग अच्छे से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। हाँ. हाँ, अब ये जो I think 44, same can be seen in Nifty's 19250 call as well. अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ के ऊपर की OI वहां पे खड़ी हो गई है जो 250 की कॉल है. You see, there is an यस, increase in the 250 call writers now. So हाँ, it's बट very पुट राइटर्स भी हैं वहां पर, और पुट का ओआई तो आपका करीब 2 करोड़ 30 लाख के आसपास है. जी, सॉरी, हाँ, 2 करोड़ 30 लाख के आसपास है. तो बेसिकली अगर आज भी अगर मैं आपसे पूछूं तो ये रेंज 19300 19250 का बन गया है अगर आप ओआई डेटा के ऊपर ही पूछें. सो राइट नाउ द निफ्टी इज हॉवरिंग बिटवीन विल हॉवर बिटवीन 19250 एंड 300 गिवन द डेटा व्हिच इज गेटिंग फॉर्म्ड. और ये मैं फ्यूचर लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, स्पॉट के लेवल से नहीं. हाँ। अभी थोड़ा सा वीकनेस जो मैंने अभी ट्रेड दिया है वो बैंक निफ्टी में दिया था समवेयर क्लोज टू 73 75, क्योंकि यहाँ पर भी गई ओके. है, वन वीक डेरिवेटिव में भी सेम रिकमेंडेशन गई है कि बैंक निफ्टी में हम लोग एक बार पुट के लिए देख सकते हैं। 65 टू 70 पे गया था, हम लोग ने जब देखा है तब ये 75 के आसपास चल रहा था, तो ठीक है अभी 80 पर है, बट आई बिलीव कि ये जो है 44,000 पुट कुड बी समवेयर क्लोज टू 125 वी में सी है। So that could be the day, that could be the ओके. trade, and I'm not looking out for any major breakout or breakdown in next half an hour. अगर अपटिक मिलती है तो that is very good for us, क्योंकि फ्यूचर का जो डिस्काउंट उस वक्त 30 रुपए का था, that has came down to 15-12 रुपीज। तो डिस्पाइट ये रीजन है कि आपका स्पॉट नीचे आने के बाद भी हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम नहीं बढ़े, उसका रीजन ये था कि हमारा फ्यूचर का डिस्काउंट खत्म हो जा रहा था। Right, right, absolutely. So viewers who are watching, there was 44,000 put initiated on one click derivative जो हमने which we had discussed a few like when we were live from 12 to 1:15, and it was suggested near right by 65. It was suggested near 65. Can you just share 65 that has screen given again? there, but मैं जब आया हूँ तो that was trading somewhere close to 73, so 73 75 we can Now it is consider. at, yeah, now it is trading at 80, around 80 81 is where it is trading. So someone who wants to enter right now, Rajbhai, is it a good time to enter? Yes, If someone wants to yes, take a trade at with 44,000 a put option. stop loss around Yes. 53, yeah. Yeah. With a stop loss 53, you can enter 44,000 put option, which is trading at 80 rupees. So 80 is the entry price, 53 is the stop loss, and one can enter 44,000 put option. Perfect. So viewers who are listening, viewers are you there? मतलब कुछ chat में yes no भेज दोगे आप लोग तो हमें भी समझ में आ जाएगा guys are here or not, because there's no waiting for your reply. So the new recommendation, new trade recommendation from our derivative head, Mr. Rajdeepak Singh, is buy 44,000 PE at 80 with the stop loss with SL at 53, right, Rajbhai? Yes, Okay, so I put it in the chat box at 80. It was suggested at one. It was suggested at 65 on our one click FNO page. So if anyone has entered it at from that level, great. One who wants to enter right now can enter at 80. Now it is baat karte karte it is at 88. It is Rajbhai, target is 120, right? You said target would be yes, 120, somewhere 120 for this one. yes, somewhere close to 120 Yeah. 125. So guys, target for this, yeah, target is 120. Target is 120. I'm writing in the chat. 44,000 put initiated at 80 for viewers on YouTube.
It initiated at 65 for viewers of one click FNO. Target is 120. Stop loss is 53. Let's see where does this go. Right now, CMP is 86, 87. Had seen 90 as well. So cool. So Raj bhai, ये एक trade आ गया निफ्टी में. You will wait for 230. So I'll ask you at 230. It's 211 No, now. So basic again. 19 मिनट बाद. What is happening that I am bearish. I am looking out for the negative move, but my view stands till 230 only, right? तो अगर 230 हाँ तक आ जाता है तो that, अच्छा है, नहीं आता आई एम डन फॉर द डे. yeah. What is Yeah, that's right, Mohammed. Mohammed, that's right. The target is 120. The entry price was 80. Stop loss not 45. Stop loss is 52. Mohammed, stop loss is 52. Can we enter the call on FNO? Yes, that is the call. Huh? 44 on put option. Bank Nifty is the call. Okay. Any view on 19,300 put? Someone's asking Rajbhai. 19,300 पे आपका क्या view है? See, अभी भी ये वहीं पर है जहां पे ये 12 बजे था. निफ्टी भी वहीं पर है ऑलमोस्ट. अगर मुझे ये जो Right. फ्यूचर का डिस्काउंट है ना कम होता हुआ मिलता है ना तो आई विल बी मोर हैप्पी. ये डिस्काउंट जब तक है तब तक देयर इज ऑलवेज अ Okay. प्रोबेबिलिटी दैट वी माइट सी सम कवरिंग. बट इफ आई हैव टू बाय तो अभी Okay. जो रिसेंट लो है हाँ. अगेन योर 50% कैपिटल विल बी वाइप्ड आउट अगर ये स्टॉप लॉस लगता है. तो मेरे ख्याल से 27-28 मिल जाएगा तो बहुत अच्छी चीज है. बट somewhere close to stop loss, somewhere close to 15 rupees, we can look at buying Nifty put as well. Nifty put as well. Yes. Yeah. So Nifty 19,300 put. Again, if it is near 25, that is the perfect level to enter. Now it has gone to 35. I think last time when we spoke, Raj bhai, आपने clearly कहा था कि 25 के आसपास मिले तो आप enter कर सकते हैं. And if somebody has entered it, तो somebody has entered it when we were away for that 45-minute break. So any target for this because it is 36. तो अगर किसने 25 पे enter किया तो already 36 आ चुका है वो. तो 11-12 रुपए बन चुका है क्योंकि वहाँ एक पे. बार That is almost 45 के ऊपर 50%. निकलता है ना ये हाँ. निफ्टी का 19300 पुट इस बार. So हाँ. I would be expecting it to move towards 70 today itself. Okay. Today it says at 70. Wow. Yes, yes. तो That's आज कुछ some बड़ा हो target. सकता है, धमाल हो सकता है, बट 230 पे क्या होगा मैं उस पे नहीं जा रहा. But most probably market should come down. That is my opinion. That's why I had given put options, strictly prohibiting anybody to enter into calls. So I believe वो चीज एक है जो हम लोगों ने देखी है कि मार्केट जो है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है. Okay. हाँ. So Rajbhai, someone has got 44,300 call option and he's asking whether he can exit or wait. So I think मैं सर जानता अब हूँ तो आपका उसमें आंसर कुछ क्या बचा होगा. ही नहीं है सर. 44,300 कॉल में क्या बचा है? मतलब अगर मैं उसका प्राइस देखूंगा 10 रुपए होगा सर. 3-4 रुपए है उसमें. आप एग्जिट करके भी क्या करेंगे? अब तो 2:30 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है. मैं तो उस व्यू का हूँ. तो अगर मार्केट गिर गया तो आपके सॉरी चल गया तो फिर पैसे आ जाएंगे. Yeah. अभी Rajbhai, हमारे बात करते करते 44,000 put option is at 100. It has crossed 100. Viewers, if you have bought this live में या पहले you can just give us a thumbs up or something. Let हमें भी लगे कि इसने buy किया है. And if you like this, you can like the hit like button as well. Hit the like button on our stream, YouTube stream पे. You can hit that as well. Because it is trading at 108 near Rajbhai's target now. Rajbhai's target is 120. It is trading at 109, 110 right now. So yeah, things are moving thick and fast. Things are moving thick and fast. Let's see what happens. Perfect. Perfect. राज भाई ये तो हो गया. अब 15 मिनट बाकी है. तब तक यू वांट टू टेक सम क्वेश्चंस. जी. we'll take some questions as well. राज भाई बाय चांस अभी एनी ट्रेल स्टॉप लॉस या किसी को आप कुछ क्वांटिटी बुक करने बोलेंगे जिनके मल्टीपल लॉट्स है. अगर मल्टीपल लॉट्स हैं तो डेफिनेटली वन शुड लुक एट बुकिंग सम प्रॉफिट्स. मार्जिनल प्रॉफिट शुड बी देयर. 25% अराउंड. आई थिंक हाँ 25% बिल्कुल. अराउंड होगी. आपका 120 का टारगेट आया नहीं अब तक. हाँ सो या हाँ एक ones 9 who के have आसपास. multiple lots can book 25% of 25% of the quantity. Okay. Raj bhai, someone is asking
Bought 19,300 put at 25. Should I wait for 70 or no? Is the question. Come again, you're not audible in किसी between. ने 19,300 का पुट लिया है 25 रुपए पे. ही इज आस्किंग वेदर ही शुड वेट फॉर 70. सर आपने 25 का वेट लिया है तो आप होल्ड करें. अगर आपने एक लॉट लिया ना तो डेफिनेटली आप होल्ड करिए. अगर आपने ज्यादा लिया है तो थोड़ा सा बुक कर लीजिए. Yes. Again, Bank Nifty maybe it was very clearly said around 105, 108 that if you have multiple lots, you can book some right now and hold because expiry move can go either way. And Rajbhai is of the view that after 230, anything it is going to be it can go anyway, but it will go up or down. It can be a very volatile affair from 230. So if you are a safe player and if you have multiple lots in Bank Nifty call, which was given put that was given 44,000 put that was given by Rajbhai, please book some profits there, book part profit there, and that'll be better. Uh, from next week onwards, there will be 2 days for Wednesday and Thursday. That even we are not sure, Krishna Prasad sir. सर We अब तो हमें will ऐसा लगता है कि आना ही बंद कर देते हैं हम लोग. we will definitely update it on our Telegram channel. We are very active on our Telegram channel, so we'll definitely let you guys know that if we are coming on both days. Because thing is, there are many other work because Rajbhai has to oversee his entire derivative calls recommendation on the website as well. So his bandwidth is very difficult. यहाँ पे भी 3 hours. I know how difficult it is for Rajbhai to devote. So we'll definitely try that we take maximum output from him. But Thursday though he'll be there. Wednesday we'll let you know on our Telegram channel depending on how things pan out next week. So Rajbhai, देखो अभी request आ रहा है. Everybody is requesting you to come, so please do consider it. I know it is very difficult, but आपका time थोड़ा यहाँ पे भी दे दीजिए तो अच्छा रहेगा. राजभाई यस तो बोल तो. अरे सर बोल के भी क्या फायदा, कैसे आएंगे. I'll definitely make sure that you come. So viewers, I'll try to get him. देखिए जो बेरिश बायस है मेरा, दैट इज इन द ब्रॉडर मार्केट, दैट इज पैनिंग आउट. मिड कैप एंड स्मॉल कैप दे आर as of now they are positive, but the way selling is there they may come down further. तो हो क्या रहा है कि आपके हैवी वेट्स जो है इस वक्त, जो उल्टा था अभी तक आपके मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे थे, निफ्टी वहीं पर था. बहुत टाइम के बाद ऐसा है कि आपके मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है मार्केट में. सो दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग अस इन आवर पुट ऑप्शन प्राइसेस. सो फॉर मी आई एम लुकिंग एट कि एक बार अगर ये 19,250 के आसपास आज आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी. तो अगले 10 मिनट में, 15 मिनट में, तो anybody who has bought put option will be able to get exit, a good exit, Yeah. I believe. Yeah, absolutely. Rajbhai, interesting thing is बैंक निफ्टी में 43,000 44,000 पे हाईएस्ट हुआ ही नहीं है. 43,900 के स्ट्राइक पे है. Yes, yes. वही तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था ना. हाँ. हाँ, कि आपका यहाँ पर लोग जो है उल्टा हो गया है. यहाँ पर कॉल स्ट्राइक जो है, देखिए सॉरी ये निफ्टी है, मैंने अभी हटा दिया. Milind sir, no, Nifty will not come down to 6,400 level. Please do not expect that. that. He wants to say I think 377 or 277. And he is in 64477. That is 64,477. I think that's some mistake there. ओके राज भाई, अगर नेक्स्ट वीक बार दो आएंगे तो मार्केट प्रेशर समझाएं प्लीज. ओके राज भाई, आपके लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं. प्लीज डू कंसिडर दिस. लॉट ऑफ पीपल वांट टू हियर फ्रॉम यू. दे वांट यू टू कम 2 days. प्लीज ट्राई इट प्लीज. देखो पिछले आधे घंटे में भी गौरव, अगर आप डेटा देखोगे तो 43,900 पुट में क्लोजर हुआ है. राइट. और कॉल्स में एडिशन हो रहा है. अब बस अब मेरे ख्याल से हमारा टारगेट आने क्या होगा. नहीं आया. हाँ. ये जो फ्यूचर्स का प्रीमियम और डिस्काउंट का खेल हो रहा है ना, उस वक्त ये 15 रुपए का डिस्काउंट था, अभी ये सिर्फ 6 रुपए का डिस्काउंट बचा है. ये एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे ऑप्शन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं. राइट. मैं अगले 7-8 मिनट के बाद, मतलब वट एवर द डायरेक्शन मार्केट विल पीक एट 230 or 235, दैट शुड बी अ यूनिफॉर्म डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर.
तो अगर ये यहाँ से पूरा पलट भी जाता है, सो प्लीज गाइस हैव ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, इवन इफ यू वांट टू पुट इट एट योर कॉस्ट, नाउ पुट इट एट योर कॉस्ट, और just by 5 rupees put it like that, Okay. because the direction market will pick somewhere from 235, that may continue towards the end of the day or at least till 3. Yeah. तो आज का दिन काफी चौपी होने वाला है, तो डोंट ट्राई टू कि उल्टा खेलने की जरूरत नहीं है आपको। 235 के बाद जिस डायरेक्शन में जाता हुआ मार्केट देखिए उसी डायरेक्शन में खेलिए। अगर आपको ऊपर जाता दिख रहा है तो आप बाई कॉल कर लीजिए, और एटीएम करिएगा, बहुत दूर ओटीएम का नहीं कि 350 का ले रहे हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में 44,300 का ले रहे हैं। जो लीजिएगा एटीएम प्राइस पास के प्राइस लीजिएगा। Okay. Rajbhai, I'm sharing something for you. Okay, just give me. Okay. राजभाई 7 more minutes to go. मैं तब तक वेट कर रहा हूँ, देखते हैं। नहीं, मैं बोलो 5-7 रुपए का 5-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर जो है आप अपनी पोजीशन क्लोज कर दीजिए, ट्रेल स्टॉप लॉस लेके। आई विल नॉट बी, और मेरे ख्याल से आगे आ जाएगा दोबारा से बीएनटी। देखिए किस तरीके से मार्केट के ऑप्शंस के प्राइस देखिए कितनी तेजी से टूटे हैं। Yes. जबकि आपका स्पॉट इतनी तेजी से नहीं चला है, ऑप्शन के प्राइस उससे ज्यादा तेजी से टूटे हैं। द Right. रीजन बीइंग वंस अगेन योर, अगर ये रहा निफ्टी स्पॉट, Yeah. हाँ डे लो से 273 से 285, 12 Yeah. रुपए ही चला है। आपके ऑप्शन 8 रुपए से ज्यादा टूट गए। चल हाँ या 40 का 28, 12 रुपए का ऑप्शन टूटा है। तो जितना स्पॉट चलेगा उतना कभी भी ऑप्शन नहीं टूटता। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। Yes. We are seeing this move, very fast move coming in, because Bank Nifty also is trading at 44,000. अभी in 43,980 के पास आ गया है। Like 20, 40, 60 point move is like it's coming thick and fast now. And I think this volatility, I think you're waiting for this volatility, and जो डायरेक्शन मार्केट लेगा आप उसी में जाने वाले हैं। आपने वो भी बहुत क्लियर किया है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उस डायरेक्शन में ही पोजीशन लिया जाएगा यहाँ से। सो वील वेट फॉर अनदर 6 5 6 minutes and then we can see where does the market go. ये देखिए मतलब अगर मैं डेलो से बात करूं तो निफ्टी सिर्फ 4 पॉइंट नीचे ऊपर Yeah. है। स्पॉट का डेलो इज 272, करेंटली इट इज एट 278। Yeah. तो सिर्फ 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और जो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम है इसमें वोलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। Yes. और ये चीज और धीमे धीमे आज की डेट में ज्यादा होने वाली है, इसलिए ट्रेड विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। Right. Your money could be wiped off within a seconds. Yeah. Whatever may happen will happen thick and fast, again very clear, because 44,000 का पुट 108 से 86 आ गया वापस। So again there's a 20 point melt, मतलब फटाक से, मतलब I think good that you clearly said कि आप यहाँ पे बुक कर लो, जितना भी सेफ रहना है आप बुक कर लीजिए। I think that was a very good call, राज भाई। ओके राज भाई, समझ रखी कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट वेबसाइट पे जो हमारे मंथली कैफिनो है उसमें दिया गया है 19250 पुट ऑप्शन बाय करने। सो डू यू रिकमेंड दैट? See, I believe that is the trade more of a hero zero trade. Okay. I'm not sitting with the team so that I can have a chat with them. But that Yeah. could be more of a hero zero trade because we are supposed to give stop losses. That's why we are giving that stop loss. But the way market is coming down, the way we have formed our view, it's more clearly is from the negative perspective. But whatever, see, I have given reasoning lot of time because today is the monthly settlement. There is huge events lined up, so that's why I don't want to take a call on that. After 2:30, it's over, I believe. Whatever the direction market will find, that will continue. Okay. So basically आप बोल रहे हो कि वो हीरो जीरो है। So he was asking 19250 put option which is said please take treat it as a zero hero call
where the stop loss is zero. It can go down to zero as well. So उस हिसाब से please keep in check your quantity. Very important because stop loss is zero. So do not go overboard with the trade. And ideally, if it is a zero hero trade, one should only trade 25% of the quantity that he trades normally. So suppose you are a trader who trades 10 lots. So you should not take more than 3 lots in zero hero call. That's the crux of zero hero because the stop loss is zero, your entire capital may get wiped out. So never put 100% of your capital, never put more than 25% of your capital. That's what I'll say. Because these type of moves can, when they become good, but when they become like when they go on the opposite side where from your prediction, they can give you massive losses. So that's one thing you should keep in mind about how much exposure you should keep for zero hero call. अभी अगर मैं किसी को मतलब गौरव मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग Yeah. Not a recommendation. Yeah. 44 call is at 23 rupees. Right. Okay. Yeah. Market is somewhere close to 44,000 only, and your put is still 90 rupees. Right. So that itself is suggesting how much pressure is there in the market. Right. तो अगर कहीं कवरिंग स्टार्ट होती है तो योर 44 कॉल कुड बिकम अ 2 bagger 3 bagger. बट इवन आज पूरे दिन में ऐसा सिनेरियो बना रहा है, पूरा दिन ऐसा ही रहा है कि आपके कॉल ऑप्शंस बहुत ज्यादा प्रेशर में रहे हैं. Right. तो अनलेस आप एक राउंड कवरिंग का ना देख लें, इस कवरिंग के लिए प्रीएम्प्ट ना करें. Yes. प्रीएम्प्ट ना करें. अगर आपको 44,000 कॉल के टाइप में घुसना है तो पहले इसको डबल होने दीजिए, फिर उसके बाद डबल के ऊपर खेलने की कोशिश, फिर भी वो एक चलेगा. बट प्रीएम्प्ट मत करिएगा कि हाँ ये कॉल सस्ता है तो मैं ले लूं. Right. That's a very like fair enough suggestion, Rajbhai. And as we speak, Nifty is below 280 again, near 270. It's at 277, 276. 272 is the low. And the option And prices are still there. yes. And Rajbhai, today is the monthly expiry of Nifty. And if you clearly see, if Nifty closes below 19,230 levels, जो आपका टारगेट है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आने का, टारगेट नहीं, योर एक्सपेक्टेशन, that confirms a bearish engulfing on monthly charts today. 1 घंटा बाकी है, and if Nifty closes below 19,230, then it confirms a bearish engulfing, which is not a good sign as well. So we need to, like, last 1 hour will be very, very, very interesting. Wait, I'll try to. Is it okay if I share my screen, Rajbhai? हाँ बिल्कुल, प्लीज. Is my screen visible, Rajbhai? Yes, yes. So I'll just try to show it to our viewers that if you see this, this is also sort of a bearish engulfing, not an exact one, but this was an engulfing and we saw a downtrend. And right now, if you see here, Nifty is sort of making that. If you see, Rajbhai, दिख रहा है ये आपको? हाँ. So this closing becomes very interesting, and if Nifty is not able to sustain above that level, like about 230, then Rajbhai, जो आप बोल रहे थे कि आगे जाके we may expect more pain in the market, that becomes very, 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 very clear. So this will be very. इस तरीके का इंगल्फिंग पैटर्न आप जो बोल रहे हैं बनता है, हाँ. तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? कितना पॉइंट और मार्केट में यहाँ से? ये राजभाई ये तो नहीं बोल सकते, बट वो ट्रेंड रिवर्स कर देते हैं एक्चुअली. इफ यू सी, इट इज अ ट्रेंड रिवर्स. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इनगल्फ हुआ, वी हैड अ कॉन्फर्मेशन एंड वी वेंट डाउन. और यहाँ पे दोजी यूजुअली अगेन अ रिवर्सल पैटर्न एंड सी वी सॉ अप ट्रेंड. सो बेसिकली बेरिश एनगल्फिंग कंफर्म्स अ डाउन ट्रेंड एंड वी नीड्स अ कॉन्फर्मेशन. सो नेक्स्ट 15 डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. So इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि someone should not go overboard in long position. This is what the pattern has been made, and this is today is the monthly closing. So it will be very interesting to see where we close today. 3:30 today is a very, very interesting time for Nifty bulls. So this is one of my 2 cents. That what I have spotted. This is not a recommendation, nothing. This is just an observation that I've seen on the technical charts of Nifty. It's 2:30. Yeah, it's 2:30. आपके strategy का time. So we'll take your strategy. So
देखिए, अगर मेरे को अभी कुछ करना है ना, तो 44,000 call is available at 23, 43,900 put is available at 20 rupees. Yeah. So overall 40 rupees, 43 rupees का मेरा total net outflow है. Not even that, it's somewhere close to 41 now. Yeah. मैं इन दोनों को बाई करके छोड़ दूंगा. I'll keep an stop loss of somewhere close to 8 rupees, and that would be the case for me. Okay. Okay. So viewers, first trade is coming in Bank Nifty from Rajbhai. Bank Nifty me is asking to buy 44,000 call option, which is at 20, and 43,900 put option, both at 20. So please buy both at whatever, both at CMPL, right? Yeah, yeah. Combined premium would be between 40 to 45. नहीं 40 to नहीं, 40, combined premium is 40 rupees. 40 rupees. Combined premium 40 rupees. Stop loss is zero. Stop loss is zero. Rajbhai, target, and target is इसमें टारगेट पे मत जाओ, मतलब आपका पैसा okay. डबल हो जाए तुरंत निकल जाइए. जिस तरफ का आपकी Okay. स्ट्राइक डबल ट्रिपल हो रही है उसको रखे रहिए, दूसरी छोड़ दीजिएगा. Okay, perfect. So viewers, 40 rupees combined premium, and the target here would be अगर आपके पैसे डबल. So basically, if you hit, if Nifty hits, if your value of both the premium hits 80, you can take the exit there. So this is the strategy shared by a derivative head. Basically, this is a long strangle. Whenever you buy call and put option of different strikes, that is known as a strangle. So he has asked to buy 44,000 call option and 43,000 put, 43,900 put option. Combined premium 40, target double, that is 80, stop loss is zero. राज भाई कुछ निफ्टी में? निफ्टी में तो ऑलरेडी वो है यार. निफ्टी में तो अगर 250 का मतलब ऑलरेडी वो भी जीरो हीरो की तरह से ही दे रखा गया है. तो अगर हाँ उसमें आता है तो सी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में मूव आना चाहिए. हाँ नहीं आ रहा है तो इट वुड बी अ डिसअपॉइंटिंग डे फॉर मी, हाँ. because I don't know which direction it will come. That's why I'm giving both call and put buy. Perfect. आप जो है क्या है कि ठीक है, मतलब दिस प्रीमियम इज नॉट गोइंग टू जीरो टिल 35. तो Hmm. हाँ, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा रख सकते हैं. हम देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह का मूव आ रहा है. बट Hmm. होपफुली इट शुड ऑन द डाउन साइड ओनली. दैट्स व्हाट आई बिलीव, बट आई डोंट वांट टू टेक चांस. दैट्स व्हाई गिविंग Okay. बोथ कॉल एंड पुट. Fair enough, राज भाई, fair enough. अभी combined premium, अभी जो आपका 44,000 का पुट ऑप्शन था वो वापस 100 के ऊपर चले गया. उसका वैल्यू अभी जस्ट 100 का टिकर देखा एंड इट्स एट 97 96 अगेन. बट इट इज आल्सो ट्रेडिंग एट अ वेरी, इट इज ट्रेडिंग इन प्रॉफिट. सो अगेन अ गुड वर्क देयर. सो लेट्स ओके, सी. सो व्यूअर्स, हाँ या या हाँ राज. हाँ राज भाई कुछ बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं कहता हूँ कि बस मतलब वी शुड Yeah. से. Viewers, is the strategy clear? Strategy is buy Bank Nifty 44,000 call option, buy Bank Nifty 43,900 put option. Combined premium total is 40, target is 80, stop loss is zero. Basically, in terms of stop loss, you can have a 15 rupees sort of stop loss. That's not an one can have a 15 rupees stop loss. That should be there till 305. उतना तो नहीं जाएगा, इतना डिके नहीं होने वाला है इसमें. तो अभी ये 37 का चल रहा है. You can have a stop loss of 15 rupees, यानी net net 20 rupees loss. Okay. So let's see. I think क्योंकि क्या है ना, आप मूव देते हो, मार्केट आपको कभी चिढ़ा देता है कि जब आप 245 बोलते हो कि अब हो गया, उसके जैसे ही आप बंद करते हो वैसे ही मार्केट आपके इस डायरेक्शन में चले जाता है. तो आज तो आपको मैं जाने नहीं देने वाला 3 बजे के पहले. अरे जाने दे भाई. So, viewers, any questions that you have, any doubts or something, you can put it in the chat. We'll take it up because strategy is shared for Nifty Bank for Bank Nifty. For Nifty, that 19,250 put option is what it is, zero and hero call, which is already given on our platform. That is one click FNO, so you can see it there.
Raj bhai, there's a question. Which future or stock to concentrate for next month? कुछ recommendation है आपकी तरफ से? नहीं सर, मैं डेटा देखूंगा रोल ओवर Hello. का, एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू। I received a mail from you. Okay. Next, I'll go with monthly chart of Bank Nifty bearish. Should we look calls in bank? Any specific? No, right now, Milind sir, nothing on that end. Raj bhai has not shared any call. Sir, Raj bhai, someone has bought Adani Port 790 put option and sales 87 put option. Any recommendation there? Any thoughts? सर, मेटल इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, एंड अगेन आई हैव सेड इन द मॉर्निंग कि डोंट लुक एट टुडेस मूव एज एन मार्केट इंडिकेटर. Today being 31st and considering there are number of trades which is likely to happen after 3, so we might see some false moves today. But sale, if you have bought put option, have a very strict stop loss and accordingly trade. And same with Adani ports. In Adani ports, I wasn't expecting stock to come down. Today there was some news, because of that it has opened a gap down. For me, stock is having very strong support somewhere close to 785. Trading near those levels, 790 is already there. So if it is moving below 785, my view, my bias should change. But as of now, no. I would request you to either book it or trail a stop loss. 804 समथिंग सॉर्ट ऑफ लेवल, अगर ये इसके ऊपर जा रहा है तो प्लीज एग्जिट योर पुट ऑप्शंस. Hmm. Hmm. Okay. So Raj bhai, 40,000 पुट भी आपका प्रॉफिट में जा रहा है. एनी व्यू ऑन हिंडनबर्ग 2.0? नो 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 प्लीज. हिंडनबर्ग एंड ऑल इज नॉट आवर लुकआउट. वो देयर इज ओके. व्यू ऑन सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक, राज भाई. तो आई थिंक व्यू ऑन सिटी यूनियन बैंक. I would avoid this stock. One of the worst performer in the F&O space. Don't know why the stock is trading near its 52-week low. ओके. So for me, it's a clear avoid. Anything, if I have to buy, even think about the buying, then I'll start looking only beyond 130. So पहले तो यहाँ से 10-12% चलेगा, तब मैं सोचूंगा कि इसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Till then तो strict no. ओके, फेयर इनफ. अब देखो, बात इंटरेस्टिंग. करते करते हाँ. निफ्टी से 80 पॉइंट्स डाउन हो गया, राइट? हाँ. बैंक आपका, निफ्टी. हाँ सर, नहीं नहीं, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ. निफ्टी इज हाँ 320 से. 9265. हाँ बराबर 320 से. हाँ. 265. आपका जो डिस्काउंट चल रहा था वो डिस्काउंट खत्म हो गया, तो फ्यूचर हाँ नहीं गिरा, केवल स्पॉट गिरा इस बार. बराबर और इस वजह से आपके ऑप्शन प्रीमियम नहीं बढ़े. तो बराबर. आप एक तरीके से आ भी रहे हैं, मतलब अब तो केवल इसमें 4 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू रह गई ऑप्शन में. राइट. और लेकिन राज भाई एक चीज नोटिस की करेंगे आप, जी, मेरे को आपने पक्का देखा होगा, कॉल राइटर्स 250 पे बढ़ गए हैं. हाँ हाँ, वो मैं देख रहा हूँ उस चीज को. कॉल राइटर्स जो है आपके बैंक निफ्टी में, आप देखिए, इसमें तो छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी देखिए एक बार. हम्म. बैंक निफ्टी में आपके कॉल राइटर्स जो है, अगर आप पिछले 15 मिनट में भी देखोगे तो किस तरीके से उन्होंने 44,000 के कॉल को राइट कर रखा है, वो बहुत ही बड़ा है. ये 43,900 में लोगों ने दोबारा से पुट राइट करने की कोशिश की है. राइट. एंड अगर आपका निफ्टी में जैसा आप बोल रहे हो कि आपके, देखिए ये तो 3 करोड़ शेयर हो गया 19,300 का. तो इसके वो ऊपर तो क्रॉस नहीं हो रहा है. हाँ, अब तो उसको, मतलब सी अगेन आई एम सेइंग, आज की डेट पे मैं नहीं जाऊंगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट जस्ट बेस्ड ऑन डेटा नहीं होना चाहिए. और जिस तरह से 250 के कॉल में लोग आए हैं, वो तो एक्सपायरी शुड बी बिलो 250. बट ठीक है, दिस इज द मार्केट, एंड हमारा जो ओपिनियन है, स्टिल वी आर होल्डिंग द सेम व्यू. राइट. ये 9300 का पुट,
यार। मतलब मेरे ख्याल से 19300 का पुट वही 50 लेवल जो दिनेश सर भी बताया और जो आपका फर्स्ट टारगेट था हमारे जो पोर्टल पे दिया गया था, आई थिंक दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब अगर वो 50 के ऊपर निकलता है वो पुट ऑप्शन, तभी इसमें बड़ा सा डिक्लाइन राइट, मिलेगा। राइट, कि फिलहाल के लिए ये अब मेरे ख्याल से फ्यूचर में अभी ये आप जो कह रहे थे राइट है कि डिस्काउंट खत्म हो चुका है। मतलब 3 पॉइंट का ही, 3-2 पॉइंट का है वो तो मिनिस्ट्रियल है, प्रीमियम में आ उसको गया, डिस्काउंट मिल प्रीमियम देना में आ गया। है। राइट, राइट, 1-2 पॉइंट की इसलिए पुट ऑप्शन की वैल्यू थोड़ी घट गई थी, अभी 2 पॉइंट से तुरंत घट गई थी। राइट भाई, स्क्रीन शेयर करके रख देंगे आप अपना, वो नाम आ रहा है सिर्फ लिख के। अच्छा, आ रही है। हाँ, चलो राज भाई 240 लेके आते हैं, 230 240 लेके आते हैं। अरे आप जो बोलो मैं ले आऊं, बस वो आना चाहिए ना। देखो ना, बैंक निफ्टी हिल नहीं रहा है अपनी जगह से स्पॉट में। थोड़े थोड़े वक्त की बात है। या तो जैसे आपने बोला था ना कि जो व्यू है मैक्सिमम वो जो प्राइस्ड इन होके रहेंगे शायद उसके से भी मूव नहीं होता होगा वो। यही है अब आपका, अभी इस वक्त जो प्रेशर है वो ब्रॉडर मार्केट में है। हम्म, इस वक्त जो प्रेशर है वो मिड कैप निफ्टी, देखिए आप ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है ये देखिए, ये मिड कैप निफ्टी है। हम्म, हम्म, तो ये आपके ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर बता रहा है, मतलब जो नेक्स्ट मार्केट है निफ्टी में आपका रिलायंस, और ये देखिए ये स्मॉल मिड कैप इंडेक्स है, और ये आपका स्मॉल कैप में लगाने जा रहा हूँ। स्मॉल राइट, कैप अभी नहीं गिरा है, यानी अभी और गिर सकता है अभी। इट कुड बी। आहुति का नाम सुना है, जो हम लोग सूर्य को देते हैं सुबह सुबह, हाँ। जल, तो ये हो सकता है। राजू वैसे 44,000 का पुट ऑप्शन 110 आ गया है, 111 एक। 115 का हाई मारा है अभी इसने। हाँ, उसने और मैं, जस्ट मारा है। और निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने फ्यूचर में 43,900 ब्रेक किया है चलिए जस्ट। भाई, टारगेट आ गया, जय श्री राम का। टारगेट आ गया, यस, 44,000 पुट ऑप्शन का टारगेट आ गया 120 का। सो व्यूअर्स, टारगेट वाज 120 इफ यू रिमेंबर फॉर 44,000 put option given at 80 here and 65 on the portal. Once holding 44,000 put option can book it at 120, that is target achieved from Rajbhai given. Yes, Shibaram Bhattacharya ji, he is using Spider. Okay, so 44,000 put option target done, target achieved, signed, sealed, and delivered from Mr. Rajdeepak Singh for Nifty. निफ्टी तो उधर ही है राज भाई, मतलब उसको तो हिलना ही नहीं है जैसे लग रहा है ना। वो प्रीमियम हिल रहा है, 40 पे आके अटका हुआ है। वही है, अच्छा वो हम लोगों ने उसको जो पुट है ना, वो हाँ, नीचे का वेट करके बाय करने की सलाह दी थी। एब्सोल्युटली। अदरवाइज हम दोनों तरफ से बढ़ सकते हैं। बस एक चीज अच्छी लगी कि हम लोगों ने गलत रिकमेंडेशन नहीं दी, गलत सलाह नहीं दी कि आप कॉल बाय करिए। सो दैट इज समथिंग विच आई वुड से कि हाँ, शायद हमारी तरफ से एक अच्छा प्रयास हुआ है। एब्सोल्युटली। तो अब वेट करते हैं हमारे 40 पॉइंट वाले ट्रायंगल का, जिसका टारगेट का हम वेट करते हैं। सो आई फील राज भाई एक प्रेशर, अगर ये ऐसे नीचे रहा, मतलब फ्यूचर लेवल पे बैंक निफ्टी गोस बिलो 43,875, आई थिंक एक अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि जो लोग 30 रुपए और 20 रुपए पे लिखने आए रहेंगे ऑप्शंस को, हाँ, उनके ऊपर प्रेशर इजीली बिल्डअप हो जाएगा यहाँ से अगर ये आता है तो। गौरव, क्या हम इसको 3.5 तक एक्सटेंड कर रहे हैं? आपको करना है? मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, एक बार मैं ऋषि से पूछ लेता हूँ। ऋषि जी, हमारे डायरेक्टर ऋषि जी, हाँ सर बोलिए, सॉरी। हम कर सकते हैं एक्सटेंड इसको? यस यस, नो वरीज। ओके, ओके, हाँ राज भाई हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो मैं व्यूअर्स, मैं वील बी बैक अगेन। वी आर हियर टिल, मैं गौरव में एक्शन, चलो ठीक है, मैं, हम चलिए। व्यूअर्स विल बी बैक इन 10 मिनट्स। द सेशन इज टिल 3:30 टुडे। सो या, और टारगेट्स भी हिट हो रहे हैं, निफ्टी न्यू लो, बैंक निफ्टी न्यू लो, एंड यस दैट्स व्हाट्स हैपनिंग।
करो। Raj bhai, are you back? Viewers, Raj, we are waiting for Raj Deepak bhai. I'm there. I'll just call and ask him whether he's back or not. हाँ जी करो। हाँ राज भाई, तो 256 अभी आपके क्या एनालिसिस है, क्या लग रहा है आपको? बिकॉज निफ्टी वेंट टू डेज लो, मतलब हमने डेज लो 253, मतलब 250 वापस आ गया वो नीचे, थोड़ा रिट्रेस करके वो आया नीचे। बैंक निफ्टी इज स्टिल होल्डिंग, मतलब 43,900 लेवल वो होल्ड कर रहा है। अब तो गौरव 3 बजे के बाद, 3-5 के बाद ही देखना चाहिए हमें। ओके, तो हम रुकते हैं। वी आर देयर, वील एक्सटेंड दिस टिल 3:30, वील टेक सम। मनीष भाई, both were given as zero hero, so we can hold. We are just waiting for it. Let's see. No, Fazluddin, 120 target book था ना, 44,000 put. It went to 120 and we had said कि it will, it you were supposed to book your profits there. So that call was closed already. When before we took our break, it was already said ki to book profits there. Now it is at 77 again. So it has lost its, it has gone below the buying price. So target was achieved there. So Rajbhai, any view on UPL? Someone's asking. सर बहुत ही एक्साइटिंग लेवल है उसका, बट आई वोंट रिकमेंड इट बाय थ्रू ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर। आई वुड से कि उसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ सकता है। तो वो एक ट्रेड हो सकती है थोड़ा सा, मतलब आउट ऑफ ऑल द केमिकल स्टॉक्स दैट इज वन ऑफ द चीपेस्ट वन पार्ट ऑफ निफ्टी। तो यहाँ पर उसमें खोने के लिए बहुत कम है। Right. तो यस, वन कैन लुक एट इट फ्रॉम मोर फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव चार्टिकली, और किसी तरीके से देखेंगे तो आई एम नॉट श्योर एनीबॉडी वुड से कि ओके वन शुड बाय इट। फ्रॉम एफ&ओ पर्सपेक्टिव मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि आप इसका ओआई देखिएगा स्टॉक का। तो देखिए, पिछले इस साल से ही अगर आप देखोगे तो लगातार स्टॉक वाज अंडर प्रेशर। तो जो इसका
1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास कोवाई होता था, करेंटली इट इज समवेयर क्लोज टू 4 करोड़ शेयर्स। तो इट इज ड्यू फॉर कवरिंग। कब आएगी, कैसे आएगी, मतलब टाइमिंग इज गोइंग टू बी प्रीटी डिफिकल्ट। लाइफ हाई वाई पे खड़ा हुआ है स्टॉक, सो यस देयर आर वेरी हाई चांसेस फॉर द स्टॉक टू विटनेस सम कवरिंग, बट पहले कवरिंग आए उसके बाद वी शुड लुक एट कि हाँ भाई अब हमें जो है इसको आगे के लिए खेलना चाहिए। परफेक्ट। तो कैश में ले सकते हैं, एफ के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। मतलब ये तो बेस्ट हो जाएगा कि इतना सब होने के बाद भी बैंक निफ्टी क्लोज्ड एट 44,000, निफ्टी क्लोजेस एट 9250 और 300, so that is something which is going to be very very surprising. That's right. That's right. We should ये see some volumes in next 5 minutes. या वही मैं भी वही चीज को अपने इस पे रखा हूँ. It's this Yes. hourly candle for me which closed on very high volumes. Nifty is also seeing some move now. The Nifty has covered almost 30 points from day's low. Bank Nifty is above 44,000 now in spot at least. Future, Future is still 50 points discount. yeah, that is the main worry. But yes, if Bank Nifty is able to move above 44,025, 4450, then जो आपने 44,000 का कॉल दिया है वो हीरो बन जाएगा. हम्म। ये देखिए एक बड़ी ब्लॉक डील पीएफसी में देखिए, हाँ, ये मैं ये आपके एमएससीआई में इंक्लूड हुआ था राइट, और देखिए ये स्टॉक। राइट. यस, एमएससीआई में इंक्लूड हुआ था और ये वही ब्लॉक डील का असर. राज भाई, कोई और स्टॉक में आपको दिख रहा है वॉल्यूम जहाँ पे एमएससीआई इंक्लूजन आना था? ये रहा कमेंट्स। Cummins, yes, big move again. MSCI moves are playing in for sure. यही If मैं you आपको see, बोल रहा था कि ये चीज जो है ना, ये पहले hmm, से हुआ है, ये चीज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, क्योंकि अगर इंक्लूजन होना होता, फ्लो आना होता तो स्टॉक में सेलिंग वॉल्यूम तो नहीं देखने को मिल रहा होता ना। हाँ, तो राइट, देखिए एक इस टिक में 1 करोड़ 40 लाख का वॉल्यूम है और स्टॉक 259 से 265 से 260 5 रुपए राइट, गिरा। राइट, लाइफ हाई वॉल्यूम हो गया है आज पीएफसी में, राइट. not life high exactly, but I think one of the highest we have seen in 2020. And Nifty again is not able to hold 280. It is coming down. 269 levels पे आ गया है. Bank Nifty. Yes. ये हमें लग रहा है गौरव हाँ. अब जाकर इसमें कुछ हुआ है, पहली बार पूरे दिन में ऑप्शंस में ये कवरिंग देखने को मिली है पुट ऑप्शंस में। हम्म. आपका 22 रुपए का पुट ऑप्शन अचानक से 42 रुपए हो गया एक। राइट. उसी तरह बैंक निफ्टी भी अब नीचे आ रहा है. लेट्स सी बैंक निफ्टी फ्यूचर कहाँ जाता है. इफ 43,900 इज ब्रोक. 920 चल रहा है अभी। हाँ, वो ब्रेक होता है कि नहीं, वी हैव टू सी दैट. जी और निफ्टी में देर इज क्लियर, मतलब क्लियरली हम देख सकते हैं कि निफ्टी में देर इज अ प्रेशर एंड निफ्टी इज गोइंग डाउन. 50 रुपीज निफ्टी का प्रीमियम हो गया। यस. एंड बैंक निफ्टी, निफ्टी में अगर आप देखें 15 मिनट कैंडल पे राज भाई, तो ह्यूज वॉल्यूम्स अगेन. एमएससीआई थिंग इज बैलेंसिंग, रीबैलेंसिंग इज किकिंग इन नाउ.
Nifty spot and Nifty spot and future almost same. Yes. मतलब पूरा दिन वेट कराने के बाद सुबह का, और वो जो पूरी दिन के ट्रेड थी उसको एक ट्रेड में इसने किया। 25 से 27 का मतलब इनिशिएशन प्राइस, टारगेट वाज समवेयर क्लोज टू 55। Yeah. इस टिक में 5 मिनट की टिक में हमें वो दोनों देखने को मिले। Yes. अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर को आप नजर में रखिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर इज निफ्टी इज बिलो 248 or 250, sorry, it's at 248, below 250 now. Huge spike in volumes. $44,000 CE was not suggested, Mohammed. अबे निफ्टी देखिए एक बार। निफ्टी 238 नया लो। Yes, Nifty 19300 put option has crossed 50 and it's trading at 60. 2 Yeah, it has crossed that level. There is a huge move in Nifty. Bank Nifty is not showing that. Let me see Bank Nifty कहाँ पे है. Yes, Bank Nifty future now is trading at 43,900. So it's below 9. It is below 43,900 now. Interesting. तो वापस वही राज भाई जो आपने प्रेडिक्ट किया था 3.5 के आसपास ही आएगा मूव जो आएगा, एंड इट इज स्टार्टिंग टू किक इन स्लोली. अब कुछ नहीं होगा, मेरा लगता है हो गई जो होना था, खत्म हो गया, खत्म हो गया। 5 मिनट है और जो अपन ने 230 का सोचा था, देखिए अगेन पिछले एक्सपायरी की तरह इस बार भी सेम चीज हुई कि हमारा राइट जो टारगेट था वो 230 था, बट क्या या मैं वो पैसों को, मतलब व्यू सही होने के बाद भी क्या मैं रिकमेंडेशंस के थ्रू मैं उसको जस्टिफाई हम लोग कर सके, तो आंसर वुड बी नो। बाय वी हैव बॉट पुट ऑप्शंस, बट बिकॉज ऑफ द वेरी लेट मूवमेंट या we were not able to fully capture that gains. Exactly. I think same has happened with Bank Nifty, if I'm not wrong. And Bank Nifty has gone up. It is able to hold on to 43,900. So Rajbhai, given this move, what do you expect in the next, मतलब आगे वीक में क्या लग रहा है आपको, given today's closing? Is it a good closing or a bad closing? Definitely it's a bad closing, but again, series ends. So after the series, what you can do, you need to at least look at the data before making any comment. So Yeah, for me, yes, so I'm more of a data yeah, dependent guy. yeah. तो राजभाई वन थिंग विल जस्ट से, विल जस्ट अपडेट जो स्ट्रैटेजी हमने दी थी बैंक निफ्टी की 230 को 40 पॉइंट प्रीमियम पे, जीरो हीरो स्ट्रैटेजी, दैट दैट हैज स्टॉप लॉस हिट देयर बिकॉज वी दैट वाज जीरो हीरो, तो वहां पे जीरो हो गया वो, ऑलमोस्ट इट इज जीरो. सो वंस वो होल्डिंग इट, मतलब देयर इज नो पॉइंट एग्जिटिंग नाउ, इट बिकम जीरो. सो दैट इज वन स्ट्रैटेजी दैट डिड नॉट वर्क टुडे. सो it's a it's a stop loss hit there. 44,000 put option
is where we got a target, so 120. 19,300 25 रुपीज पे दिया था, अल्टीमेट टारगेट ऑफ 55, आई थिंक दैट हैज हिट, जो वन क्लिक पे दिया था। एंड आपने यहाँ पे सजेस्ट नहीं किया था उसको बाय करने के लिए, बट वंस हु वुड हैव बॉट दैट, वहां पे भी एक टारगेट हिट हो गया है। 19,250 जीरो हीरो, आई थिंक अगेन there that's a mixed feeling there because it is trading at 6 rupees. I don't know at what price was that executed, so considering that as well. Dipankar sir, because it is now almost end of, only 20 minutes left, right? So whenever it is near the strike price, the price is always strike price minus the Nifty price where it is trading. तो वो हिसाब से premium decide होती है. So it is at that level, so that is where the premium is low. So overall, a good day, apart from the final strategy of 230 where it became zero. Rest has been a perfect view. 235 was expected. Nifty is at 235. It made a low of 233 and now it is at 247. So net a good day. View played well. Options two places profit booked. One place profit not booked. One place SL gone. 40 point SL. Control L दबाने हैं। Okay, Rajbhai, can we conclude it? Yeah, we can. एक question है, last one. Yeah. Regarding HDFC Bank, sir, HDFC Limited is not anymore. It has become a part of bank. And regarding HDFC Bank, sir, at current juncture, I cannot be negative in the stock. It is the biggest underperformer, and the why it has been falling down could be this recent outflows in the market and the expectation कि MSCI इसका weight बढ़ेगा जो नहीं बढ़ा उसकी वजह से। But at current juncture तीन चीजें हैं। पहला, मैं एफएनओ सेगमेंट से अगर बात करूं तो जो मैंने यूपीएल के लिए बोला सेम चीज अप्लाइज हियर। ओआई इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट 13 करोड़ शेयर्स। तो यहाँ पर इसको, और क्लियरली इट्स ऑन द शॉर्ट साइड, तो एक कवरिंग, पहला मूव कवरिंग का आने दीजिए, उसके बाद वी विल लुक इनटू कि वेदर वी कैन बाय इट और नॉट। दूसरी चीज, अगर इसमें एक बार कवरिंग स्टार्ट होती है तो स्टॉक में मूव वंस अगेन बैक टुवर्ड्स 1700, बट डोंट प्ले इट इन एफएनओ। यू कैन एक्यूमुलेट इन कैश। एंटीसिपेट इन चीजों का कि कवरिंग कल से आएगी या 15 दिन बाद आएगी, वो चीजें काफी डिफिकल्ट हो जाती हैं। इसलिए एज ऑफ नाउ आई डोंट सी एचडीएफसी बैंक टू अंडर परफॉर्म फर्दर। माय व्यू विल निगेट ओनली बिलो 19200। अगर निफ्टी 19200 के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट कर देता है देन इट शुड बी कंसीडर्ड नेगेटिव। द रीजन बीइंग, फिर आपका जो थोड़ा सा जो ये कंसोलिडेशन चल रहा है दैट माइट एक्सटेंड। एज ऑफ नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी एक बार 19200 के पास सपोर्ट ले, जो पिछले 3 हफ्ते से हम लोग कंसोलिडेशन देख रहे हैं दैट शुड कंटिन्यू। दैट कुड बी द परफेक्ट स्टेज फॉर एचडीएफसी बैंक टू आउट परफॉर्म, कि बाकी सेक्टर्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए और ये आपके मार्केट को संभाले। तो मैं यहाँ पर सेल नहीं करूंगा, बाई अगर करना होगा तो एक्यूमुलेट करूंगा स्टैगर्ड वे में इन इक्विटीज, will not play the stock in F&O. Okay, Kiran sir, thank you. Our energy remains same because हम लोग trade नहीं करते हैं। we are and if we take trade, it is all on our view. Okay, so Rajbhai, we'll conclude it here. So thank you viewers for joining us. See you guys next Thursday for sure. Wednesday, I'll let you know. We'll let you know on our Telegram channel. So thank you. Join us in the next expiry week. Thank you, Rajbhai. Thank you, everybody. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for listening. Thank you, everybody. Yeah, bye. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.